अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आप सब जानते हैं कि हम यहाँ 2 रोज़ा वर्कशॉप बराए आरडीस एंड आरडीस के इफ्तिताही इजलास में जमा हुए हैं। हमारे जो हरदिल अज़ीज़ मेहमानान हैं यहाँ आ चुके हैं। मैं फ़र्दन आप दरख्वास्त करती हूँ कि अपने डायस पर तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब, हरदिल अज़ीज़ वाइस चांसलर मानू को दावत देती हूँ कि वो आप डायस पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर घंटा साहब हमारे आज के मेहमान एजाज़ी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सर आप भी डायस पर तशरीफ़ लाएँ। साथ ही प्रोफेसर इश्तियाक साहब रजिस्ट्रार मानू वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो डायस पर तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही हमारे हरकियाती क़ायद प्रोफेसर रज़ौला साहब भी हैं जो ऑलरेडी डायस पर आ चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये 2 रोज़ा वर्कशॉप डीडी की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्टाफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड क्वालिटी के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। ये इस तरह का दूसरा मौका है जब हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं। और 2 रोज़ा पहला जो वर्कशॉप था वो दिसंबर 2021 में हुआ था और आप तमाम से उस वक्त भी मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छे कारामा सेशंस हुए थे। मैं समझती हूँ कि उससे आप तमाम को उससे फ़ायदा हुआ है। और इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि दो दिनों में जो हमारे सेशंस होने वाले हैं जो बहुत ही मैं समझती हूँ कि अहमियत के हामिल हैं, उसे आप तमाम को और ख़ुद डीडी को बहुत उससे फ़ायदा हासिल होगा। मैं अपनी तमहीदी कलमात को और ज़्यादा तूल न देते हुए इस इफ्तिताही इजलास के आगाज़ के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए डॉक्टर उमर फ़ारूक जो हमारी डीडी की फ़ैकल्टी हैं दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, अभी आपके सामने सूरह हुजरात की 4 आयतें, आयत नंबर 10, 11, 12 और 13 तिलावत की गई। उसका उर्दू तर्जमा समाअत फरमाएँ। तमाम अहले ईमान भाई भाई हैं,
लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। ए ईमान वालो, न कोई मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ और न एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फ़िस्क़ करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज न आएँ वही ज़ालिम हैं। ए ईमान वालो, ज़्यादा बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। और तजस्सुस न करो और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तुम्हें ख़ुद उससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह डॉक्टर उमर फ़ारूक, आपने अभी तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाई उर्दू तर्जुमे के साथ। बेशक इन आयात में हमारे लिए बहुत ही सरतासर बोलना चाहिए कि हिदायत और रहनुमाई है। अल्लाह हम सब को इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक दे। इसके बाद मैं हमारे IMC से दरख्वास्त करती हूँ कि वे मानू का तराना पेश करें। इस मानू के तराने के बाद मैं हमारे हरदिल-अज़ीज़ और हरकियाती लीडर डायरेक्टर रज़ाउल्लाह साहब से अदबन दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज के तमाम शुरका का, यहाँ पर मौजूद तमाम शुरका का खैर मक़दम करें और अपने खैर मक़दमी खिताब से हमको नवाजें। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह साहब।
इज़्ज़त-माब शेख जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, रजिस्ट्रार प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब, DDE के एडवाइज़र प्रोफेसर घंटा रमेश साहब, यहाँ पर मौजूद सभी डिग्नेटरीज़, कंट्रोल ऑफ एग्ज़ामिनेशन आए हुए हैं, प्रोफेसर प्रदीप साहब हैं, हमारे सभी RDs, ARDs, सभी स्टाफ, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले तो इन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। हम तकरीबन 18 महीने बाद फिर से एक जगह जमे हुए हैं और हम अपना अपना एहतसाब करेंगे, अपना अपना जायज़ा लेंगे कि हमने क्या किया इन 18 महीनों में। यही इस वर्कशॉप का मकसद है और देखें कि क्या आगे हमारे राहें खुली हैं, किस तरह से हम अपनी मुश्किलात को हल करते हुए आगे मार्च करते हैं ऑनरेबल VC साहब की क़यादत में। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम मिले थे पिछली बार, हमारे पास में कहने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने ये शेर पढ़ा कि हमारे पास में कहने को कुछ तो है अब, कि हमने जो जो कोर्सेस हमारे पास में थे वो पूरे रिस्टोर कर लिए हैं। 11 प्रोग्राम्स थे जो UGC ने जिनका एडमिशन रोका था वो पूरे रिस्टोर हो गए हैं। 4 कोर्सेस हम ऑलरेडी हमारी तरफ से चलाते हैं, 2 डिप्लोमा 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस। उसमें 2 कोर्सेस यानी कि 2 डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पहली बार हम मुतारिफ़ करा रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है कि ये कोर्सेज़ भी लॉन्च होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में जो 2 डिप्लोमा है उनकी प्रोग्राम गाइड का भी हम इजरा करेंगे। साथ साथ DD का मैनुअल बहुत दिन से पेंडिंग था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मैनुअल इज़ ए हैंडबुक बेसिकली, उसमें सारी चीज़ें दर्ज हैं, सारे आपके किस तरह से प्रोसेस काम करेंगे RDs ARDs और किस तरह से MOUs और LSCs का मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो उसका भी इजरा आज हम बदस्ते शेख जामिया प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब के हाथ से करेंगे। DD का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुछ हमने रिफॉर्म्स को जो हाथ में लिया था 1.5 साल पहले, वो था कि सिस्टमिक रेजिलियंस का अप्रोच हमने अपनाया था। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी को आप बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा होता है कि जिससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने जो है तो पिछले दिनों में अपनाई है। आगे रास्ता खुला है। बजाय हम अपनी मुश्किलात और अपने चैलेंजेस का जिक्र करने के, मैं यहाँ पर उम्मीद और जो ऑप्टिमिज़म है उसके एंगल से ये बताऊँ कि राहें खुली हैं। रोने वालों हंसी की बात करो, आप जानते हैं जो सेकेंडरी वर्ष का जो अशार है, 1-2 मैं उसमें से पढ़ देता हूँ। अब यहाँ पर बैठे हैं हमारी अथॉरिटी, तो उनके सामने शेर ऐसा है जैसा किसी हम सूरज को दिया बता रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे भी थोड़ी समझ में आती है उर्दू की, तो कभी कभी याद कर लेता हूँ। तो उसमें सिकंदरी की जो वर्ष की जो नज़्म है उसमें यही है कि फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। उसके बाद में उनका जैसा काफ़ी बड़ी लंबी नज़्म है, तो उन्वान तो यही है, लेकिन उसमें यही है कि उम्मीद की राह, आगे का जो रास्ता है वो हम रोशनी के हिसाब से करेंगे, अंधेरे के तस्करे करके हम क्या करेंगे। यही हमने VC साहब से भी सीखा है कि बहुत इंक्लूसिव अप्रोच है। आप देखते हैं आप लोगों से भी वो कांटेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से भी कांटेक्ट करते हैं, LSCs के लोगों से भी मिल लेते हैं। तो ये एक तरह का बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच रखने से हुआ ये कि बहुत सारी जो मुश्किलात थी वो मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन वो महसूस कम होती हैं हमें। तो चैलेंजेस को सर करने का या चैलेंजेस को हल करने का तरीक़ा यही होता है। पिछले दिनों में हमने रेमेडियल कोचिंग का एक इनिशिएटिव लिया था, बहुत कामयाब हुआ और उसके लिए ख़ास तौर से हमने अब ये डिसाइड किया है कि जो कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे हमारे, उसमें से हम 1/3 जो है तो ब्लेंडेड मोड में ऑनलाइन कराएंगे। जब हम एडमिशन का ड्राइव बात करूंगा मैं, तो गुलफिशा मैडम से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि काउंसलिंग सेशन के बारे में जो हमारी स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर ले। सर, DDE में हमारे पास में 6 डिफरेंट यूनिट्स के तहत हम काम करते हैं। तो मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे STR QA यूनिट है, ये स्टूडेंट सपोर्ट यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस यूनिट है, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है।
तो ये डिफरेंट यूनिट्स जो हैं ये 6, इसके अलावा हमने इस साल एक एडिशन उसमें किया है, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सेल। क्योंकि जब सीका का हमारी रिपोर्ट के लिए तकाजा होने लगा डेप्थ से, तो हमें समझ में आया कि इसको एक मुस्तकिल परमानेंट ऑर्गन होना चाहिए जो डीडी में काम करे क्वालिटी मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स के लिए। तो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सेल हमने लास्ट मंथ में इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा हमारे पास में 2 ऑन कार्ड्स प्रोजेक्ट्स हैं। एक है वर्चुअल लर्निंग सेंटर वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश। ऑनरेबल वीसी साहब ने उसको सीका में भी अप्रूव किया, बातचीत हो चुकी है। वर्चुअल लर्निंग सेंटर में होगा ये कि ब्लेंडेड मोड में हम फ्यूचर में जो जाना है ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह के लिए, उसके हिसाब से हम एक पूरा वर्चुअल लर्निंग सेंटर डीडी में भी अंडरग्राउंड में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, काम चल रहा है मतलब उसका। दूसरा हमारा एक है मदरसा कनेक्ट प्रोग्राम जो हमने सीका में अप्रूव किया। ऑनरेबल वाइस चांसलर का इनिशिएटिव था ये कि आप इस तरह से शुरुआत कीजिए। तो जितने भी मदारिस है आपके अपने एरियाज़ में, अपने रीजन में, उनको फिर से हमको विज़िट करना है, उनको इन्वॉल्व करना है और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। उनके लिए ख़ास तौर से हम ये शुरू करेंगे कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश का एक छोटा सा मॉड्यूल शुरू कराएंगे पहले वर्चुअल लर्निंग के तहत, ताकि हमारा उनसे एक ताल्लुक़ और एक इस्टेब्लिश हो लिंक। फिर वो लिंक को कितना स्ट्रेंथन करते हैं वो आप लोगों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को ख़ास तौर से मदरसा ड्राइव फिर से लेना पड़ेगा हाथ में, और उसमें नंबर ऑफ़ मदरसाज अभी जो 293 हैं उसको कम से कम 500 लेकर जाना है। एक और बात बताया, मेरा रिक्वेस्ट है ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से, क्योंकि मौका की मुनासिबत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास में जो फीडबैक मिलता है मुझे जो रीजनल सेंटर्स से और जो आरडीज ARD से, वो ये है कि उनके पास में कोई बजट नहीं होता कि वो विज़िट करे LSCs को। जब इंस्पेक्शन होता है, जब भी वो एक बार जा रहे हैं, तो ये टाइम एंड अगेन ये मतलब कई क्वार्टर्स से बात आई थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कि इनकी जो ये रिक्वेस्ट है, जो इनका डिमांड है कि ईयरली इनको 70-80 हज़ार या कम से कम 1 लाख रुपये अगर दे दिए जाएँ बजट में, तो वो ताकि जो है तो LSCs को भी जा सकें, इंस्पेक्शन भी कर सकें, एग्ज़ामिनेशन के तौर पे ख़ास तौर से जो माल प्रैक्टिस होती है उसको रोक सकें, और जब भी उनको ऐसा लगे कि कोई LSC परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो विज़िट करके एक अच्छे अंदाज में सारी चीज़ें चेक करके जायज़ा ले सकें। लेकिन एक रिक्वेस्ट RDs ARD से ये रहेगी, अगर मान लीजिए ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब अप्रूव करते हैं इस प्रपोज़ल को, तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। एट द सेम टाइम जुडिशियस इस्तेमाल कीजिए वो पैसे का। ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट में जा रहे हैं आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी मतलब कम काम होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। प्लान इस तरह से बनाइए कि एक ही रूट पर आप गाड़ी लेकर गए तो आप मैक्सिमम LSCs कवर कर लीजिए। जब आप जुडिशियस यूज़ करेंगे पैसे का तो काम ज़्यादा हो सकेगा, रिसोर्सेज का सही आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मेरी वर्ड ऑफ एडवाइस है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो हमें दोपहर के जो सेशन है उसमें एडमिशन के ड्राइव के तहत आप लोगों से बातचीत करूँगा। चूँकि वक्त की कमी है और हमको वाइस चांसलर साहब को सुनना है, तो मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक हमेशा हमारा वतीरा या कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शुआर अपना ख़दीम है, जहाँ रोशनी की कमी हुई वहीं एक चराग जला दिया। चलते चलते एक बात कह दूं कि मैनेजमेंट में केसलेट बोलकर हम करते हैं कि छोटे छोटे केसेस की बुनियाद पर उसका तजिया करते हैं और फिर कुछ नतीजात करते हैं। एक शू कंपनी ने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अफ्रीका भेजा। उसमें बेसिक पर्पज़ ये था कि मार्केट सर्वे किया जाए और मालूम किया जाए कि उसमें कितना पोटेंशियल है वहाँ की मार्केट में। ज़माना टेलीग्राम का था, टेलीग्राम आया, नोबडी पुट्स ऑन शू और फुटवेयर, देयर इज़ नो डिमांड। आ गया, ठीक है, काफ़ी अर्सा गुजर गया, फिर सोचा गया कि चलो फिर से एक बार रिविज़िट करते हैं। अनदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाज सेंट देयर। वो गया, जाने के बाद में पूरा मार्केट स्टडी किया। उसने जो टेलीग्राम दिया उसके वर्ड्स सुन लीजिए कि देयर इज़ नो फुटवेयर अवेलेबल हियर, स्टार्ट डिस्पैचिंग। तो ये बताता है आपको कि आप वही फैक्ट है किस तरह से देखा गया। आप ये देखिए कि मदरसा नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। हमेशा वहाँ पर बच्चे हैं, हमको उनको पहुँचना है, टू रीच द अनरीच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रोफेसर रज़ाउल्लाह साहब।
आपने बहुत ही अब तमाम शुरुका के लिए जो मेरे साथी आरडीस एंड आरडीस हैं उनको एक लतीफ़ इशारा दे दिया है यहाँ पर अपने खैर मकदबी या बोलना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम के सिलसिले में जो शेर के साथ आपको मुखातिब किया और आप तमाम समझ गए होंगे उसका मतलब। उसी को मैं एक और इकबाल के एक बहुत ही मेरा पसंदीदा शेर है उसको सप्लीमेंट करना चाहूँगी। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मैं चूँकि वक्त की कमी है मुझे मालूम है, तो हम नेक्स्ट हमारा जो कदम है उसकी तरफ आते हैं। अब हम हमारे जो डिग्नेटरीज यहाँ पर हैं डायस पर उनकी तहनीत करते हैं और उसके लिए मैं प्रोफेसर रज़ाउल्लाह साहब से ख्वाहिश करती हूँ कि वो शॉल और बुके पेश करें। सबसे पहले सर आप प्रोफेसर नैनुल हसन साहब की गुलपोशी और बुके पेश करें। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह साहब अब रजिस्ट्रार प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब को गुलपोशी और शॉलपोशी और गुलपोशी करेंगे। अब प्रोफेसर रज़ाउल्लाह साहब हमारे डीडी के एडवाइज़र और हमारे बहुत ही देरीना रहनुमा और ख़ास तौर पे एजुकेशन से जुड़े प्रोफेसर खट्टा रमेश साहब की शॉलपोशी करेंगे और उन्हें बुके पेश करेंगे। जैसा कि अभी अपने खैर मकदी कलमात में या इब्तदाई कलिमात में प्रोफेसर साहब डायरेक्टर साहब ने जिस तरह से बताया आपको कि इस बार दो अहम एजुकेशन से रिलेटेड 2 डिप्लोमा कोर्सेज़ का आगाज़ होने जा रहा है और इसी साल 2023 के जुलाई सेशन से इंशाल्लाह वो उसकी शुरुआत हो जाएंगी, दाखिलों की शुरुआत। तो इस सिलसिले में इस जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इन 2 प्रोग्राम्स के, फर्स्ट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और दूसरा डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो इन दोनों के जो कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने प्रोग्राम गाइड तैयार कर ली है जो कि कम्प्लीटली उसमें हर चीज़ बताई गई है, दाखिलों के अमल से लेकर उसको इख्तिताम तक के, कोर्स के इख्तिताम तक के, प्रोग्राम के इख्तिताम तक के। तो आज इस मौके पर हम उन प्रोग्राम गाइड जो डीडी की है, डीडी के मैनुअल और इन 2 प्रोग्राम जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं उनके प्रोग्राम गाइड्स के इजराई का अमल भी करने वाले हैं। मैं हमारे इज़्ज़त माब वाइस चांसलर प्रोफेसर नैनुल हसन साहब से अदबन दरख्वास्त करती हूँ कि वो इन किताबों की, इन प्रोग्राम गाइड एंड मैनुअल, डीडी मैनुअल की रस्म इजराई करें। बहुत अरसे से डीडी मैनुअल की ज़रूरत समझ में आ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह के ये काम बहुत ही तफसीली तौर पर अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें मैं समझती हूँ कि डीडी के मुतालिक तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तमाम मालूमात इसमें दी गई हैं। शुक्रिया सर। और एक और चीज़ इस ज़िम्मे में बता दूं कि पिछले साल हमारे डायरेक्टर साहब और प्रोफेसर एनोर साहब वाइस चांसलर की हिदायत पर अमल करते हुए हमने प्रपोजल्स मंगाए थे कि कौन कौन से जो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जिनको कि हम लॉन्च कर सकते हैं डीडी की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रपोजल्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से हमारे पास आए और इसमें और ऐसे हैं कि वो काबिल अमल हैं, लेकिन चूँकि एक ही साथ में इन तमाम कोर्सेज़ का लॉन्च करना शायद अमली तौर पर मुश्किल होता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अच्छे प्रपोजल्स हैं डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए हमें यूजीसी वगैरह से एक्स्ट्रा एडिशनल परमिशन की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए हम अपने तौर पर उनको शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हैं, बाज़ाब्ता उसकी कमेटी है जिनके पास वो
मौज़ूआत हैं या प्रोग्राम्स के नाम हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे कि, और आप सबकी दुआएं भी इसके लिए ज़रूरी हैं कि हम और ज़्यादा कोर्सेज़ हर साल इसमें ऐड करते जाएं ताकि बहुत ही वाइब्रेंट बने डीडी। और इन तमाम के लिए डीडी फैकल्टी प्लस आप तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं शुरुका आरडी सीनियर्स, उनका ताबन ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं हमारे बहुत देरीना रहनुमा गाइड बोलना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, मेरे उस्ताद भी हैं, वो प्रोफेसर घंटा रमेश साहब से सर दरख्वास्त करती हूँ कि वो डायस पर यहाँ पर आएँ और अपना खिताब पेश करें, जिससे इंशाअल्लाह हम बहुत ही इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। Honorable Vice Chancellor and President of this morning inaugural two-day workshop for RDs and ARDs, Professor Syed Hassan Sahabji, Distinguished Registrar, Professor Ahmed Saab, our respected Director Distance Education, Professor Raziullah Khan Saab, my fellow teachers from MANUU fraternity, and the field warriors coming from all over the country, RDs and ARDs, and friends from the DDE and invitees. We all should be grateful to our Honorable Vice Chancellor having permitted to have this gathering after a long time, because nowadays everywhere only online meetings are taking place. But coming together is not just to listen what people deliver from this end, but the interaction that takes place among yourselves, exchanging your own experiences and notes that will recharge and give a new direction in your day-to-day functioning at your places. Sir, as a person, I place on record my sense of gratitude. Once the director made a proposal for this kind of two-day workshop for RDs and ARDs who play a vital role in the functioning of DDE across the country, this two-day workshop will definitely pave the way in moving right direction to achieve what we intend to achieve through DDE. It's not out of context to touch upon the brief history of distance education, because being a professor of education, this is a part of our subject study. When we attained independence, the literacy rate was just 12%. We never bothered about extending higher education to many of the needy people. Focus was more on school education. That is also included in the Constitution. Nowhere in the world that higher education is to be made compulsory, but whereas school education is compulsory in almost all countries, irrespective of their political ideologies in the present context. So subsequently, there was a tremendous pressure for higher education. Then the country borrowed the idea of this distance education in a very scientific manner from British Open University. Because as a research scholar, I associated with the establishment of Dr. B.R. Ambedkar Open University. Earlier it was AP Open University. That is the first open university imparting education through distance mode. So even prior to that, in our system, this distance education is there. But earlier it was called as postal education.
then correspondence education, then distance education, afterwards open and distance learning. Now people are talking about digital and online education. These are all different stages. So now MANUU again is a very unique institution. You all aware, I don't think any elaboration is required. Because I have seen almost all universities. Unfortunately, when there is a tremendous demand for higher education, because the higher education always aim at four important things, that is accessibility, affordability, inclusion and achieving excellence. These are the fundamental things that every higher education institution should strive to realize. Because in formal mode education is not that easy because it's little expensive. Even then higher education in India is cheaper when compared to many of the countries in the world. But distance education is having certain unique advantages where the education is taken to the doorsteps of the people. And in the beginning, the distance education is conceived for extending their educational qualifications and updating their knowledge. That was the purpose. That's the reason earlier, even in the British Open University, it is meant for working people. But subsequently in our country, in order to address the accessibility and affordability, we even started providing education those who want to pursue while earning their bread and butter. That's the unique trend that the distance education in this country we introduced. So in that context, MANUU, its effort, because you all are aware, it started with the distance education, but the way how the other institutions across the country are providing distance education is different from the way that the MANUU is trying to provide education in different disciplines to the clientele across the country. In many of the universities, the distance education is one source of income. Now they are starving, as you all aware that the UGC has come out with two comprehensive GOs or gazette notifications with stringent conditions because the distance education could not come up to the level of quality what people expected out of it. So now the universities are starving, but MANUU is not expecting anything out of the little fee what we collect, because if I am right and registrar is the right person to correct, nearly the fee that what we collect may not be sufficient to meet even 10 to 20% of the expenses that we incur in the distance education. So this is the uniqueness of our university. And now accessibility is not a problem. Inclusion, yes, we are even allowing the products of madrasas, providing higher education through DDE without any constraints or major constraints. So now the major concern is quality. And the Honorable Vice Chancellor created a congenial environment on the campus, striving for, on one hand, expansion, providing the relevant courses in view of the needs and requirements of the society. On the other hand, consolidating the programs in order to move in the direction of achieving excellence. So there your role is really vital, because whatever facilities, whatever inputs can be provided by the directorate from the headquarters, but the transaction that takes place at the study center or learning center, working under your vigilant supervision. So it is not just, you can't simply come out of the responsibility saying that the job is entrusted to an institution which is recognized by the university or affiliated by the university. That is not just sufficient.
Using the technology, you have to oversee the functioning of that center, because your responsibility never ends. Because I am also had the experience of working as a director of distance education for a couple of years. Generally what we do, we entrust the job to some study center which is recognized or affiliated. But unless we, the people from the headquarters and also yourself, closely coordinate the functioning of the institution, not necessarily every day we have to go there, and taking the feedback from the students, what kind of instruction that is taking place, what quality of education that is imparted, really are they happy, because they are all sometimes experienced, particularly in a course like B.Ed, but in degree, maybe they are working after +2 for some time. While working they are earning, while earning they are studying. In such cases they are matured enough, they know and provide you the best feedback. On that basis you have to see that the proper quality of education is imparted in such institutions. Your responsibility, not just mere ends giving the responsibility to the study center. Every moment we have to rather ensure whether they are doing the job what we expect out of them in order to realize the intended learning outcomes we decide for each program. Because these two books, for example, the lot of exercise that has gone into the implementation of the program, what we expect at the end of 1 year after pursuing this diploma. Otherwise, simply it's not the purpose of issuing a certificate for that fellow to qualify and get some promotion, but unless we ensure that the expected things are not realized, the purpose is defeated. So therefore, my sincere advice to all my colleagues, the RDs and ARDs, I am not going to touch upon your administrative constraint registrar and the Honorable Vice Chancellor. They are the right people. But during these 2 days, make use every minute interacting with your fellow colleagues and also with the issues concerned with are coming in the process of taking this program to the corners, hooks and corners of the country. And another thing, you have, as director stated, that the facilities that are available in the headquarters, even I have seen some regional centers, almost basic technology that is available. The distance education mostly rely upon technology. Minus technology, distance education is not at all a system or acceptable system in the process of education. So whatever technology that is available, because technology is such a thing that nothing is permanent, like constructing a building. Every time this technology undergoes modification, and whatever that is made available, we have to optimally utilize. Yesterday only I took some members to show them the strengths of our DDE. They are so surprised. The quality material that is produced, because the entire administration and the director and his colleagues are totally involved in adhering to the conditions stipulated by the expert committees, how this SLM is to be prepared. It's not just writing a book like any other system. So that is why you have quality material, we have highly qualified people at the headquarters, and you are all well versed with the conditions and requirements of the people and the institutional capacities in your own area. Only thing is how best that we involve, commit yourself, and that will result in what the Honorable Vice Chancellor and his team intend to achieve out of DDE is possible. So that's the reason my sincere request to all of you, commit yourself to the job and to the profession, because really the target group who are coming to the distance education are highly motivated and intended to learn and acquire the degrees for their life. That is why it is all possible with your commitment. The another thing is,
more particularly the education, when we come to education, because MANUU is the first university, particularly in the southern part of the country, to get the recognition from the apex body NCTE with 1,000 seats. This is only the university to have. And try to, because we have quite a good number of Urdu medium schools in interior places, probably they may not be having the communication and information that is available. Try to rather provide the information to the hooks and corners and dispense the information to all the people, all the schools. Let them come and have their B.Ed degree so that they can move vertically in their profession. And in that context, though the centers are there in your jurisdictional area, it's not out of context to make a mention that generally the students are allotted to recognized NCT recognized centers. That doesn't mean that college is having all the facilities. If necessary, you also take, that is also a part of your responsibility. If that center is short of some teachers, or if some teachers are not to the expected level of working teachers because they are teaching only to the fresh graduates, in such context there is nothing wrong. We can even involve some retired teachers or some teachers with required competencies in that center. Need not necessarily only the identified center faculty alone should teach. That is not the mandate. So try to ensure that quality education is imparted and they adhere to the stipulations made by the distance education in toto. And finally, the products of MANUU DDE should be no way inferior to that of the products of either regular system or from other systems. And if you can feel proud of their quality and if we could achieve excellence, nothing is less than that, and that will place us at the higher level. So with these few observations, once again, I request all of you to totally immerse yourself these 2 days and interact and try to get clarifications from the subject experts whom they plan to interact with you. And I'm sure once you go back to your offices or the centers, you will be altogether a different person, because there is a long gap because of this corona and all these things, and we all should work with some sort of commitment and conviction, and definitely inshallah we will stand at the top, and that is my intention, and that is the gratitude. Thank you very much. सर, आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया पेश करती हूँ. आपने हम तमाम के अंदर जो आपकी जो मोटिवेशनल स्पीच थी उसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जैसा बताया कि एक एक लम्हा इस 2 रोज़ा वर्कशॉप का इसको इस्तेमाल करें ताकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी का फ़ायदा हो. सर, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे, और अगर आप वैलिडिक्टरी में हैं तो इंशाल्लाह आप जो तासुरात सुनेंगे तो आप सहमत हो जाएंगे कि हमने आपकी एडवाइस पर अमल किया. डॉक्टर प्रोफेसर घंटा रमेश साहब यूँ तो 1.5 साल से मुशीर की हैसियत से DD से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ सिर्फ 1.5 साल से नहीं है. एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका बहुत ही देरी ना उनका ताल्लुक़ रहा है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन 2004 वो हमसे जुड़े हैं किसी न किसी हैसियत से. तो मैं हम एक और मोअज़्ज़िज़ जो डिग्निटरी यहाँ पर हैं उनको दावत ख़िताब देते हैं. मेरी मुराद प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब से है, रजिस्ट्रार मानू. वो अपना ख़िताब पेश करें सर. थैंक यू वेरी मच मैडम. With the permission of Chair, first of all, I am thankful to Honorable Vice Chancellor for holding this workshop orientation program for RDs and ARDs, second time in MANUU since he has taken over. I am also thankful to Director DDE for mooting this idea and his entire team working day and night at the Directorate of Distance Education. I'm also thankful to various organizations and offices. They are really very much involved
working day and night to resolve the problems that our students registered at DDE are facing. Of course, credit goes to Controller of Examination, Director Admission, Director CIT, and now the Samarth team also. And on top, we are always thankful to Professor Ghanta Ramesh. It's today morning, I was just feeling that something, some bigger program is going to happen. I don't know why. It was really stimulating for me that so many friends, ARDs, RDs from all over India, they have gathered. And as far as our distance education or ODL program is concerned, of course, their participation in this workshop is going to be very, very important. Professor Rajaullah Sahab has already spoken about the purpose of this workshop, but I think why this interaction is taking place. In fact, this interaction with ARDs and RDs is not only limited to them or their offices. By interacting with them, we are basically interacting with all the coordinators of LSC and our registered students, because they are the people, they know the real problem. We keep getting feedbacks in different forms, emails, and etc. But your presence here has really given you a good opportunity, as well as a very golden opportunity for us also to interact and register those problems so that we can resolve. Topics are very important. I was fascinated to see the topic like, students support in distance education, ODL changing scenario, admission drive, reaching out to madrasas, and Samarth issues. I mean, the core topics that are very important in the functioning and in strengthening the ODL education at MANUU has been identified well, and it will be discussed further. In fact, as far as problems is concerned, देखिए problem तो थे, हैं और हमेशा रहेंगे. I recall when Honorable Vice Chancellor had taken over as the Vice Chancellor of these universities, the very second day or third day, a video was circulating by one of the registered students of DDE. And that video was very widely circulated on the social media. It was sent to the Honorable Vice Chancellor also, later I came to know. And that student was, he was just counting the problems the registered students all over India were facing as far as their examination, their career, their results were concerned. No need to say that it was a very tough period. And further, the problem was, doubled due to the COVID situation and all that. But Sir selected a very dynamic director, that is Professor Rajaullah Khan. Please give a big hand to him. Ever since I joined, I have seen him working day and night with his team. I am one who prefer to, attend the office on Saturday and Sunday just for the sake of work, that there should not be any pendency. I enjoy working on Saturday or Sunday. I see that a wagon R is parked just outside the DD, and Professor Rajaullah is also there. So I feel happy that I am not the one, but he is also sitting next to us in the another building and he is working. In fact, there had been problem after problems, countless problems we used to resolve, by discussing and all that. But after, about, you can say, we are likely to complete 2 years. And these 2 years, when I also joined some 1.5 years back, whenever I used to open the email of registrar, I used to find so many letters addressed to the Honorable Vice Chancellor and CC to me.
about the problems the students of DDE, students from all over India, they were facing, their assignment problem, their examination problem, their results problems. There had been so many writ in different honorable courts also. I recall there was a writ petition in Delhi High Court. Dr. Ruchika is here, she was defending that case. And before the court could say that release the result, we had released the result of that particular B.Ed student, and court appreciated our move, because we took a decision that if our MOU with IGNOU has failed due to some technical issues, the students should not suffer. So one thing I have seen, that as far as this team is concerned, or as far as the the approach of our Honorable Vice Chancellor is there, it's very clear, one thing is very clear too, sir, that please do not come to us with problems. Rather come with solution and tell me how to resolve it. And in order to resolve the issue, he has developed a mechanism that immediately we know who are the stakeholders, who are the people like, as I said, Director DD, Director Admission, Controller of Examination, Director CTE, and Samarth team. We all sit together and we try to resolve the issue. And there have been various issues we have resolved, because Vice Chancellor Sahib has made it clear that the student should not suffer. Just counting problem is not a good thing. Resolve it, and still we are in the process of resolving various issues. But obviously we have to do in the light of Deb and Samarth team is helping us. Just 2 days back, Honorable Vice Chancellor Sahib was there in Delhi. He was guest of Honorable President of India, means he was there to attend the visitors conference. There also, yesterday I couldn't get time to interact with VC Sahib, but just within 2 minutes when he was leaving the office, I just went to him for a few files. But he just shared that how these 2 days have been utilized for discussing various issues of MANUU with the Secretary, Ministry of Education, Chairman, UGC, and other dignitaries. Means I can say that whenever sir is visiting Delhi or anywhere, the problems, the issues, everything is recorded in his mobile. And he spares no chance to see that these things are resolved with the help of Ministry of Education and UGC. In doing so, obviously, we seek the support of all of you to further strengthen the Directorate of Distance Education, ODL at MANUU. As I said that strengthening of LSCs are very important. And this is a very good opportunity for you all to discuss your problem, students' grievances, student-related problems, examination-related problem, of course your infrastructure problem that I know some of the RDs and ARDs I had the opportunity to meet briefly. So their problems should also be addressed in order to strengthen the regional centers. And I will request the Director Sahib to please pay attention to their problem. One of the RD, he said that some small help, some small incentives are very important to work at local level, particularly in rural areas. He simply said, अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ तो उसके बाइक से जा रहा तो पेट्रोल का खर्च आएगा, वो अपने पॉकेट से तो नहीं लगाएगा. बात सही है, जैसा कि रजाउल्ला साहब ने कहा, we must have some budget to meet those expenses, because this is small initiative and work can really help in strengthening our regional centers and connecting with the madrasas. That is the one of the goal of our Honorable Vice Chancellor. Second, we all say that let us follow IGNOU model. Obviously, we are trying to take things from the manuals of IGNOUs. IGNOU is a well-established university or institution as far as ODL is concerned. But there are one of the RD, he told me yesterday, there are certain things which we have adopted
many principal at our LSCs have told that this is better than the IGNOU, means MANUU is ahead in those things. So by identifying problems, this workshop has given us good opportunity to look into those problems. I will request all the ARDs and RDs to please note down your problems, discuss it with the directors separately also. As far as this workshop is concerned, beyond that also you can discuss, and we can pay attention to those small problems so that we can strengthen it further. Obviously, everything is being focused on, LSCs, RD and SRC, etc. These are very important, but as far as our team, the team of ARDs, RDs, they are working, their issues are equally important. We are well aware, Honorable Vice Chancellor is well aware with your problems, especially the problems related to service matter, promotion matter, and etc. I will not hesitate to say that sir is taking, all care to resolve your issue amicably. So far, you had been trying to resolve your issue at the UGC level. You said that please stop this, give us some more time, 3 months time. Sir, there was an agenda item that was listed for the Executive Council, but sir stopped it, deferred that item for the next TC. So time was given to you to resolve it at UGC level or Ministry of Education level, but whatever. But now sir is taking all care to resolve certain issues, if not those issues, but at least what is important is your promotional issues. Because now we have to look beyond that, how to have better promotional avenues for ARDs and even RDs. That is very important. And as all of you are aware that university is taking all care for, completing the promotions of our teachers from stage 1 to 2, 2 to 3. In this drive also, we did 68 promotion for stage 1 to 2 and 2. In that also, we tried our best to, accommodate our assistant regional directors. Some of you are here, you have been promoted. And some of the cases are pending due to certain technical issues that yesterday also I had discussion with 2 of our colleagues participating in this program, and very shortly we will resolve that in next 1 or 2 months. And the most important thing that it is in the history of MANUU, it is in the history of Directorate of Distance Education that Honorable Vice Chancellor has considered to hold departmental promotion, DPC, and through which one of our very senior ARD, he has been promoted as regional director. This is first time people said that this was not possible, this could have taken place somewhere in 2014 or 15. But people did not follow the rule, but I am thankful to the Honorable Vice Chancellor that justice has been given. So there are very issues. I know I have all sympathy for your, promotional themes. I know that ARDs and RDs are suffering, and due to, I don't want to go into those problems, but at least whatever best can be done, sir is taking all care. We are working day and night to resolve this. So why? Because if you are not encouraged, ODL will not be strengthened. This is one line is very clear. So I have also all sympathy for you, and I seek your help. Let us resolve to make DDE one of the unique premier center of not only on MANUU but all throughout the India. Thank you very much. बेहद शुक्रिया प्रोफेसर इश्तियाक साहब, आपने जो कहा हम बिल्कुल उस पर यकीन रखते हैं कि प्रेजेंटिंग ए प्रॉब्लम इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट rather than how to resolve the problems. जैसा आप जानते हैं और सभी जानते हैं, आप तमाम लोग डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़े हुए हैं कि प्रॉब्लम्स तो इन्यूमरेबल हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन महज से प्रॉब्लम गिनाने से या प्रेजेंट नहीं, वी हैव टू रिजॉल्व इट, क्योंकि हम जमा ही इसे हुए हैं कि इस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम्स पेश आते हैं तो उसको रिजॉल्व किस तरह करें, इसको हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे. हमारे यहाँ आपको बता दूँ कि हमारी
प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन जो OSD 1 है इस यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैडम, आप मुख्तसर से ही हमारे लिए 2 कलमात दाय से शेयर करें। Assalamu alaikum, good morning. We all know that distance is our source of strength, not in terms of academics but also in terms of finances. So we have been living off DDE, to be very frank in some ways. We have come on common platforms academically with a common syllabus that is shared between regular and distance. So we are trying to revise the syllabus so that we share the common syllabus, which is also the mandate of the university. But we have yet another challenge in front of us with NEP. So we still don't have any idea as to what stand the UGC is going to take with regard to NEP and distance mode. We have tried our best to see that we stick to the syllabus that is already running, because the distance education has made lot of efforts to make the SLM. So we don't want to disturb those effects, because I know how much pain, how much effort, how much time, how much money has gone into making that SLM. So we, at the regular mode, are trying our best to see that there is some kind of commonality between the syllabus, the SLM that we have already prepared, and the new syllabus that we are revising under NEP. But I think we need to have a fresh look once fresh guidelines from UGC comes regarding distance mode and NEP. This is the first time I'm meeting all the ARDs. I'm familiar with Lucknow because I'm associated with the Lucknow campus. In any case, if you have any problem, I think we have been speaking over phone with some of them. Please feel free to contact us. We are available all the time, especially in terms of resolving your problem. We are there all the time for you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम। अब हम जब सुबह से इफ्तिताई इजलास के, शायद मेरे जैसा आप तमाम भी फील कर रहे होंगे कि हम अपने वाइस चांसलर साहब को सुने, वो घड़ी आ गई है। मैं इस प्रोग्राम के सबसे लास्ट मुखातिब करने वाले प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब से बहुत ही अदब से गुजारिश करती हूँ। बेनामे खुदा बंदे जानो खैरत। प्रोफेसर घंटा रमेश, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान, and Professor Najmus Sahar, colleagues, friends, boys and girls, ladies and gentlemen. Now, इस थोड़ी देर में जब से गुफ्तगू शुरू हुई, मुझे 2-3 चीज़ें और समझ में आई। एक तो ये कि रज़ाउल्लाह साहब काफ़ी पोइट्री की तरफ रुजू हो चुके हैं। अब मैं ये तुख़्म तासीर देख रहा हूँ, और वो ये है कि एक ही आदमी मुझे नज़र आ रहा है कि जिसने इनको इंस्पायर किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बैठ जाएँ। हमारे जनाब वेरी सीनियर प्रोफेसर यहाँ के, इनको हम लोगों ने रिटायर होने से रोक लिया है। मेरा ख्याल है फरीद साहब समझ गए होंगे कि मैं किसको कह रहा हूँ। तशरीफ़ लाइए यहाँ। Now he has been instrumental in our endeavor, and he is working very hard day and night, in fact. So we must appreciate your efforts, and a very good combination, Razaullah Sahab. There are many other qualities I would not say, but rather, his passion is, Razaullah Sahab is all the time. मैंने इनसे कहा कि आप एक रूम ले लीजिए इसमें, जो इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम हो। आप यहाँ रहिए और यहाँ से सीधे आप औरंगाबाद जाइए, वहाँ से वापस आइए। नहीं, ये हो रहा है। ये मैं सजेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से सीधे अपना बैग लेके औरंगाबाद जाते हैं
वहाँ अपनी फैमिली से मिल के फिर वापस आते हैं और इसी जगह आके यहाँ पर नहाते धोते हैं, और जो भी इनका जो वार्डरोब है वो भी यही है। एनीवे, प्रोफेसर घंटा रमेश इज a fast moving person. अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में, and then he is interacting with NCT he is a member from southern region, and then UGC also. So he is our asset, I think, and we should follow his guidelines. And he has been suggesting ever since he joined our team. And that's how we are moving into a very, very positive direction. That is 100% true. Registrar and OSD, they are all working together. It's really a teamwork, in fact. ये कोई एक नाम लेके बेअदबी होगी अगर हम इस तरह से कहें कि सिर्फ एक नाम है। इसलिए कि मेरे ज्वाइन करने के बाद ऑल ऑफ ए सडन जो इश्यूज का पहाड़ आया था, हम उसको किसी हद तक उस पहाड़ को हटाने में कामयाब हुए। एक तो ये है कि दो तीन चीज़ें आपके सामने रख दूं। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे में हैं, वहाँ से काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है आप समझ जाएं। बनारस को, चांदनी चौक का सेंटर बनारस में ले जाने के लिए कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था। मगर एक आदमी है जिसने पर्दे के पीछे से काम किया। हो सकता है कभी आप उसका नाम भी जान जाए, मैं नहीं लूँगा। लेकिन आज वो रियलिटी है कि बनारस में कम से कम एक कुछ शहर के अंदर एक कोई 22-25 मदरसे हैं। इन मदारिस को हमें टच करना चाहिए। और उधर से जो उससे लगे हुए इलाके हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं, उनकी मंडी है बनारस, इंस्टीट्यूशन है बनारस। बनारस में एक अरबिक यूनिवर्सिटी भी है, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, एक अरबिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक उसी की एक शाख है जो अब अपने इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, और एक बड़ी पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ। बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस हैं। सो ऐसी जगह है कि जिसको छोड़ना नहीं चाहिए था। लखनऊ के बाद अगर कोई दूसरी जगह है तो वो बनारस है, कि जिससे वेस्टर्न बिहार भी कवर होता है और ईस्टर्न यूपी कवर होता है। आप जानते हैं आजकल पूर्वांचल की बात तो हो रही है, गोरखपुर हुआ, बलिया हुआ, आजमगढ़ है, ये सारे कहाँ से गवर्न होंगे? मिर्ज़ापुर, जौनपुर, ये सब बनारस से हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन आसान काम नहीं था। वो काम करने वाले कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बिहाइंड द सीन हैं। देखिए, हमारी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आज भी किसी से अगर हम कहते हैं कि मानू के 32 ऑफ कैंपसेस हैं, तो कहते हैं ये हमने यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया है, ये क्या मिनिस्ट्री ने आपसे कहा है? आपका कैरेक्टर 2009 के पहले का है या उसके बाद का है? देखिए भाई साहब, हमारी यूनिवर्सिटी 98 की है, आप 2009 की बात कर रहे हैं। इसका मैंडेट ही यही है। हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग भी है, हमारे पास रेगुलर लर्निंग भी है। तो उनको लगता है हाँ, हमने कहा हमारे सैटेलाइट सेंटर्स भी हैं, हमारे पास सब रीजनल सेंटर्स हैं, हम 12 स्टेट में मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास डाइवर्सिटी है। तो विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये कहूँगा, अपने जो रीजनल सेंटर्स हैं, चाहे वो आपकी हायर की हुई बिल्डिंग्स क्यों ना हो,
उनमें कम से कम आप उसको दिखाएं कि एक बड़ा सेंटर है आपके पास। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने न जाने कहाँ कहाँ सेंटर बनाए, अब वो उन सेंटर्स को बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट हैं उनके, सोच रहे हैं आप, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। आपको उनसे compete करना है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप जो सिलेबस बना रहे हैं उनके सिलेबस से अच्छा सिलेबस है, लेकिन विजिबिलिटी नहीं है हमारी, हमको विजिबल होना है। अब ये जो बुकलेट्स हैं इनका ये डायरेक्शन रेगुलर देना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए। इनसे क्या होता है कि फिर लोगों को पता चलता है कि आपके यहाँ इनोवेशंस हैं, उनके यहाँ इम्प्रूवमेंट आपके यहाँ हो रहे हैं। अब सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए आप इग्नो क्यों जाइए, मानू क्यों ना आइए? वहाँ वाले, हमें मालूम है उनकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, इससे क्यों? इंदिरा गांधी के पास सिर्फ 100 करोड़ आ रहे हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। अभी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं थे, उनका कोई वाइस चांसलर नहीं था, इसलिए कि वो है ही नहीं पार्ट उसके। एक ऑलमोस्ट सेमी प्राइवेट हो गया इंस्टीट्यूशन। अपॉइंटमेंट होता है, विजिटर ही अपॉइंट करती हैं, मगर उनकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। ओनली दे आर गेटिंग 100 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री, ओनली 100 करोड़, रेस्ट दे मैनेज एंड दे आर, you know, I can't say rich, rather instead of rich I can say wealthy. थोड़ा फर्क है ना रिच में और वेल्दी में, थोड़ा। लेट अस मार्क द डिफरेंस। सी दे आर वेल्दी, वी आर रिचर in terms of our academics, in terms of our programs, but we are not visible. थोड़ी सी विजिबिलिटी रखनी पड़ेगी। छोटे छोटे जो आपने छोटे लेटर्स से लिख रखे हैं ना, उनको हटाइए, थोड़ा बड़ा बोर्ड बनाओ। क्या है, बनाओ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, बड़ा सा लिख के उसमें रखो। अपने वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगाओ, क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर नोटिस आए, बाहर से भी देख के लोग चले जाएं। अपने जो प्रोग्राम्स निकल रहे हैं, जो भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उनको जहाँ हाईलाइट करना है हाईलाइट करो, दीवारों पर लगवा दो, तमाम कैप्चर करना पड़ेगा। इसलिए कि आज का ज़माना जो है वो जब तक कि आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। वॉशिंग पाउडर निरमा अभी दिमाग में है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग है क्या, न जाने कितने पाउडर आ गए, लेकिन अभी वही दिमाग में है। सो दिमाग में बिठाइए मौलाना आज़ाद को। दूसरा यह है कि टाइम इज़ ए बिग फैक्टर, टाइम लाइन, वक्त से काम करना है। अभी हमने देखा आप लोगों ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं बहुत खूबसूरती से कंडक्ट किए, बहुत सिस्टमेटिक वे में। आप यहाँ से भी बिल्कुल वाबस्ता रहे और डायरेक्शंस मिलते रहे, आपने परफॉर्म किया। वेरी गुड इम्प्रेशन, यू क्रिएटेड ए गुड इम्प्रेशन। अभी इसी सूरत से टाइम फ्रेम, रेगुलर और डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं। रेगुलर और डिस्टेंस को बराबर से एक ही सेमेस्टर में लाना पड़ेगा, तब आपका जो काम है वो दिखाई देगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। इससे कि टीचर्स भी अलग नहीं है, वही टीचर्स हैं वहाँ भी, वही टीचर्स वहाँ भी हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर डिस्टेंस में हैं मगर रेगुलर टीचिंग कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। बहुत सारे वहाँ हैं रेगुलर हैं जो डिस्टेंस में आके काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें फ़र्क नहीं है, कोई हमने फ़र्क नहीं किया है अपने टीचर्स के अंदर। तो आप भी इसको देखिए, टाइम इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि जो की पोजीशंस के ऊपर हैं, जो सारा काम स्टूडेंट्स की जितनी ग्रीवांसेस हैं उनको सुनते हैं। आप ये ना समझिएगा कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का रोल कम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है रोल। सारे रिकॉर्ड्स को देखना,
उनको जो बैकलॉग है उनको ख़त्म करना। अभी जो हमारे COE हैं, आप यहाँ आकर तशरीफ़ लाइए ताकि आपको देखें लोग, आपको पहचान सकें कि आप भी हैं, है ना। ये हमारे COE साहब। Now he has been working day and night very hard. In fact, issues are cropping up and then he is resolving. So ये सारा काम जो है एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, और मैं इनसे बराबर कहता रहता हूँ कि इसको ला के बराबर करो, इस सेमेस्टर को बराबर करो, इनको स्टूडेंट्स को बिल्कुल साथ में ला के रख दो, एग्ज़ाम उनका साथ हो, उनके क्लासेस जो उनके लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं उनके अंदर जो है वो क्लासेस हों, उनके वो ड्यूरेशन आके हमसे बिल्कुल मैच कर जाए। आपके सुपरवाइज़र से मुलाकात हुई थी, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे आपको, वेरी एक्टिव पर्सन इनफैक्ट, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं छुपा नहीं रहा हूँ वरना लोग आएंगे आपके पास। एनीवे उनसे मुलाकात थी, वो आपको पूछ रहे थे। तो ये है। दूसरा देखिए, ज़रूर इंटरेक्ट कीजिए, ये इंटरेक्शन से ही काम बनता है, एक दूसरे से कीजिए। हमने तो वो बनाई है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आई एम ग्लैड कि आप लोग जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज़ वंडरफुल। And I think this university should stay, not the entire WhatsApp. WhatsApp, our group should stay longer. जिससे कि यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज जो आप कर रहे हैं। एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, दिस इज़ वंडरफुल। इससे कि रीजनल सेंटर्स से हम भी कनेक्टेड हैं, हम देखते हैं उसको, लेकिन हम बहुत ओकेजनली हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। आपका जो काम है उसमें आप कहें कि यार वो वाइस चांसलर साहब ने ज़बरदस्ती इंटरवीन किया उसमें, आई डोंट वांट टू रियली, बट यू आर इंटरेक्टिंग, आई कीप इट अप। देन मदरसास, देखिए आपकी सप्लाई लाइन है, याद रखिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मदरसों को फिर से अप्रोच करिए। और हमें पता है आपकी दुश्वारी ये है कि आप अपने पॉकेट से खर्च करके क्यों जाएं, इससे कि प्रोविज़न नहीं है कहीं भी कि आप मदरसों तक जाएं। मिसाल के तौर पर अब अगर मान लीजिए कश्मीर है, अब कश्मीर में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि जहां हम कहें साहब पुलवामा गए थे आप, तो कहेंगे नहीं गए। शोपियान गए थे, नहीं गए। क्यों, वहाँ के बच्चों को क्यों आप डिप्राइव कर रहे हैं? कहना सर आपने तो पैसा ही नहीं दिया। एजाज कहेंगे कि आपने हमें दिया नहीं तो हम जाएंगे नहीं। हाँ, आपके लिए श्रीनगर में जितना कहिए इंतज़ाम कर दें, इसलिए कि वो पैसा मिल जाएगा हमें। तो ऐसा नहीं है, आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल डिप्राइव फील मत कीजिए। और आई थिंक रज़ाउल्लाह साहब बिल्कुल सही है, मैं अप्रूव कर दूं यहाँ या सिका में अप्रूव करना पड़ेगा? आई थिंक तो 1 लाख पर एनम, ओके, फॉर इंटरैक्शंस। नहीं, एक बात याद रखिएगा, हमारा कभी भी कोई विजन यहाँ पर पैसे कमाने का नहीं है, याद रखिएगा। कतई हमको वो बुरा लगता, और ये भी आपका पैसा नहीं है, ये कभी भी गवर्नमेंट कह सकती कि इसको वापस कर दो हमें, या अपने यहाँ इसको इस तरह से यूटिलाइज कर दो। इसलिए ये तो उनकी नज़र है, वो जानते हैं कि क्या है। लेकिन इससे पहले कि कहीं कोई बास की आंखें देखें, हम सोचते हैं कि भाई इसको अपने लोगों के अंदर उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो आप जो है वो मदरसा कनेक्ट को याद रखिए कि ये आपको कनेक्ट करना है, और कुछ नए प्रोग्राम्स हैं जो मदारिस में ले जाने हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्टिविटी तेज़ कर दीजिए, ओके। देन देखिए, ये उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसको याद रखिए। और आपकी यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, समझिए। आपकी यूनिवर्सिटी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह है, जैसे जेएनयू है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
मौलाना आज़ाद नेशनल, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए कि माइनॉरिटी कह के हम रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या होता है कि वो रिजर्वेशन, और पर्टिकुलरली वो SC ST वाला रिजर्वेशन जो है वो क्वेश्चन में आता है कि भाई ये तो हमारे यहाँ नहीं है, तो वहाँ पर नहीं है। मैंने अभी नजमा जी थी और गुलरेज साहब दोनों थे, बैठे थे, तो हमने कहा भाई आपके पिटीशंस चल रहे हैं वो कहाँ है? कल ये बड़ी टेढ़ी खीर है, इसके अंदर कोई पढ़ना नहीं चाहता और फाइनल वर्डिक्ट आना भी मुश्किल है, इसलिए कि माइनॉरिटी है, इसका कैरेक्टर माइनॉरिटी था, रहा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी तो माइनॉरिटी नहीं है। इसीलिए हमको जितनी भी, मैंने पिछले दिनों जो है 35 पोजीशंस को फिल किया है जो रिजर्व कैटेगरी की थी, जो पिछले 15 साल से जिनको फिल नहीं किया गया था। हाँ, 39 पोजीशंस आप देखिए। तो आप इसको जो है वो मेंटेन रखिए। वो क्या है कि ये हमारे पास ज़रूरी है कि हम उर्दू को सिर्फ उर्दू कंसीडर करें सिर्फ, जैसे कि, और जो चाहते हैं कि उर्दू में पढ़ें, कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे चाहते हैं कि हमारे पास एक उर्दू की सर्टिफिकेट आ जाए या हमें कुछ उर्दू में सीखने का मौका मिल जाए, जैसे कि उर्दू की तरफ अट्रैक्शन है। तो वो लोग जो है उनकी तरफ भी आप जाइए, उनको छोड़िए नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए कि इसको एक्सपेंड करना है, उर्दू लर्निंग को एक्सपेंड करना है। देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। कुछ हैं कैंपसेस जिनको हमें और एक्सपेंड करना है। अब हमें बडगाम का कैंपस जो है हमने प्रपोज़ल दिया है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ एक मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए। उसमें हमने 14 करोड़ रुपए मांगे हैं अपने बडगाम कैंपस के लिए। एजाज थोड़ा सा लगना पड़ेगा है, इसे कि उसका वो कॉन्क्रीट प्लान अभी नहीं आया, वो प्लान करके इसे कि CPWD से ही करना है, CPWD से वो प्लान ले। अभी हमने पिछले 2 दिन पहले डिस्कस किया है, बट नाउ एक फाइनल टच देना है इसको। मिनिस्ट्री से भी हमने बात की है, तो वो एलोकेशन हो जाएगा एंड देन वी शुड स्टार्ट। इससे कि हमें अपनी बिल्डिंग चाहिए वहाँ। हम नहीं, अगर अपनी बिल्डिंग नहीं होगी तो फिर NCT बार बार क्वेश्चन करती रहेगी आपसे कि आपका कैंपस कहाँ है, आपका कैंपस कहाँ है, आपको जो हमारे हिसाब से होना चाहिए वो कैंपस है कि नहीं है, ये भी है। दूसरा एहसन साहब हमारे यहाँ हमने दिया है गर्ल्स हॉस्टल के लिए भोपाल के अंदर, वो उसमें हमने एलोकेट किए हैं कुछ 6 करोड़ रुपए, उसमें हमारा ये बन जाएगा। तो ये 2 हमारे प्रेफरेंस हैं। इसके बाद हम और कैंपसेस में जाएंगे। अभी हम कटपा गए थे, वहाँ भी हॉस्टल बनाना है, तो नेक्स्ट फेज़ में हम वहाँ जाएंगे हॉस्टल बनाने के लिए। देखिए अभी आपके पास हॉस्टल्स नहीं, ये बड़ी मुश्किल काम है, ये हॉस्टल्स नहीं है। हॉस्टल्स होने बहुत ज़रूरी हैं जगह जगह पर। आपके पास अपनी बिल्डिंग्स बहुत सारी जगहों पर नहीं हैं। हम हायर्ड की हुई बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, उनमें क्या होता है, हमको वाटर चार्जेस, उनके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके बिल्डिंग के जो 10% हम बढ़ाते रहते हैं, वो सब हमारा बढ़ता रहता है। तो इसको ज़रा सा हमें कर्टेल करने के लिए अपना कैंपस चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों से अप्रोच कर रहे हैं। लखनऊ में भी हमारी बात चल रही है। देन क्या हो रहा है कि छोटे से मैं और बता दूं कि ये जो LFCs हैं, इनके हमने रेम्यूनरेशन बढ़ा दिए हैं। पहले इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो था कि हमें आप इतने पैसे नहीं देते, इसलिए उनको जाके आप कहिए कि आप जितना काम कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है और आप ऐसे ही काम करेंगे तो हम आपका इन्हांस करते जाएंगे। जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से अभी पिछले सिक्का में हमने अप्रूव किया ना, वो हमने उनका बढ़ा दिया रेम्यूनरेशन। आगे भी हम उसको देखेंगे। इसी तरह से जो देखिए टीचर ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सोच रहे हैं आप, ये जो हमारे पास टीचर ट्रेनिंग के लिए हमें कितनी 1000 सीट्स हैं ना, 1000 B.Ed के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, 1000 में हम पूरे 1000 नहीं भर पाएंगे।
इससे कि उसके अंदर रिजर्व कैटेगरी भी है। आपको जैसा कि बताया, हर जगह जो वो रिजर्व कैटेगरी है, जो परसेंटेज है, वो हमको निकालनी पड़ेगी। मगर आप लोग लग जाइए, प्लीज़ लग जाइए टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। लोगों के पास 500 है, हमारे पास 1000 है, डबल है। तो बहुत दिनों से इस इंतज़ार में हम लोग थे और बड़ी लड़ाई बहुत वो हुआ, और आप जानते हैं फाइनली हमको मिला है। तो हम इसको चाहते ही हैं कि जहाँ से हम शुरू करें, बेहतरीन शुरू करें। ये आपसे बिल्कुल मेरी 10 बस्ता गुजारिश है कि प्लीज़ इसमें लग जाइए, और ये हमारा बीएड प्रोग्राम जो है वो कामयाब प्रोग्राम होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिए और बिल्कुल डे एंड नाइट इसके लिए काम कीजिए। देन अपने रिकॉर्ड्स को बिल्कुल मजबूती से अपने पास रखिए। आजकल क्या हो रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो आपके ऑफिसेस के अंदर नॉक कर रही हैं, वो आके चेक कर रही हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपने हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी को नहीं बुलाया, आपने मिनिस्टर को नहीं बुलाया, हमारे चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया, आपने इसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं किया, दे आर पोकिंग नोज अननेसेसरली। जबकि ये लोग न हमको कोई कंसेशन देते। पता है सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है और जो वाटर बिल आ रहा है, आप समझ सकते हैं ये लोकल गवर्नमेंट हमको बिल्कुल कंसेशन नहीं दे रही है। और एक एक महीने में अभी उन्होंने बढ़ा दिया है, 25 लाख रुपए हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं एक महीने में, पहले हम 10 से 11, 12, 13, 14 हुआ, अभी 25 लाख हो गए। तो ये बिल्कुल मर्सीलेस हैं हमारे लिए। कहते सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, हाँ हमें नहीं देना, अपने यहाँ हो तो फीस भी माफ़ कर देंगे, वो भी कर देंगे, बच्चों को भी वो, चलो सभी कुछ है अपने यहाँ। लेकिन आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस देखते हैं तो इनका खून खोल जाता है। आप देखिए बहुत साफ साफ बोल रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पहुँचाना हो पहुँचा दे कोई भी, हमें डर नहीं है, हमें कोई कंसेशन नहीं दे रहा है। तो आप अपने यहाँ जो है वही देखिए, और आपके यहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हो गया एक वाक़या, 2 वाक़यात हो चुके पहले भी। दिल्ली ऑफिस में भी लोग आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली ऑफिस में आए, अभी कटक ऑफिस में आ गए। तो बी केयरफुल, उनके साथ कोई ऐसा आर्गूमेंट मत कीजिए, उनके साथ बहुत इत्मीनान से बात कीजिए, अपने रिकॉर्ड्स को सही रखिए। दिन क्या हो रहा है कि ये जो ज़्यादातर बात हो रही है आजकल, वो डाइवर्सिटी की बात हो रही है। सुनिए आप ध्यान से, अभी 2 दिन प्रेसिडेंट हाउस में डाइवर्सिटी की बात हुई है। उसमें एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर MOS भी थे, सुभाष सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, उसके अंदर IIM के चीफ्स थे, जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं मूर्ति साहब वो थे, एक जो एडिशनल सेक्रेटरी आया है वो बिहार और झारखंड काडर का है, वो क्या नाम है उसका, एनीवे वो भी था। इन सारे लोगों ने ज़्यादातर जो बात की है वो इक्विटी की बात की है और डाइवर्सिटी की बात की है। देखिए अल्टीमेटली जितना भी पहिया है घूम के वहीं आएगा, इससे कि इंडिया इज़ डाइवर्स, इंडिया इज़ टू डाइवर्स। लैंग्वेज है, रीजन है, कास्ट है, क्रीड है, कल्चर है, रिलीजन है, सब डाइवर्सिटीज का पार्ट है। नोवेयर एल्स यू विल फाइंड सच ए डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी के अंदर कैसे इसको मेंटेन रखते हैं, हमने वहाँ बताया उस कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा कि मानू रेगुलर की मिसाल दी, हमें पास वो तो डेटा नहीं है जो डिस्टेंस का है, लेकिन रेगुलर की बात की कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑलमोस्ट 50-50 हैं। हैरत हो गई लोगों को, इस रेशियो को देख के हैरत हुई उनको। कहने रियली, मैंने कहा,
और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। तो हमने उस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखा। लेकिन वही धर्मेंद्र प्रधान जी थे जिन्होंने कहा कि आप सारे वाइस चांसलर ये जो बैठे हुए हैं इनमें से सिर्फ 2 ही लेडीज नजर आ रही हैं, डोंट यू थिंक कि डाइवर्सिटी इसमें भी होनी चाहिए? कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये डाइवर्सिटी नहीं आ रही है, ये आपकी तरफ से आएगी। अगर आप ये कहिए कल को कि भाई ऐसा है कि अगर पैनल के अंदर 4 नाम आ रहे हैं तो 2 लेडीज़ के होने चाहिए, 2 मेल के होने चाहिए, भाई तभी तो डाइवर्सिटी आएगी। हमारे पास भी आएगा। हमारे पास तो आपके सारे नाम जो हैं वो मेल हैं और आप लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप पावरफुल हैं, तो डाइवर्सिटी आप लाइए। एनीवे, वी आर लकी इनफ दैट वी हैव डाइवर्सिटी। ओके, मेंटेन दिस डाइवर्सिटी। ओके, देन मेरे पास और कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है, आपसे रुख्सत लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इज़ मूविंग फास्टर देन लाइट। अब वो अपने प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि उनके हैपहैज़ार्ड वे में प्रोग्राम है, मुझे पता है कि वहाँ जो उर्दू वाले काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ऐसा तुम भी जानते होगे, है ना? वो इतने अच्छे नहीं हैं। वो लोग आए हुए कभी आर्मी से, जो उनका रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, वहाँ से छोड़ के यहाँ आए, रीजनल सेंटर ज्वाइन करेंगे। बहुत विशेष सर्किल है, इसको मैं बहुत करीब से जानता हूँ। उनके डिज़ाइन करने वाले परमानेंट लोग नहीं हैं, वो टेम्परेरी लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी से जो गए हैं। लेकिन दे आर ट्राइंग टू कैप्चर आवर टेरिटरी। याद रखो, मैंडेट तुम्हारा है उर्दू का। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का मैंडेट उर्दू का नहीं है, आने नहीं देना है करीब। क्यों? गिव देम रिबफ एंड अपने एकेडमिक प्रोग्राम को ऐसा एक्सेलेंस बनाओ कि कोई आ ही ना पाए तुम्हारे तक। मैं यहाँ उर्दू वालों से मैंने बहुत बात की है, और हमारा खुदा का शुक्र है कि हमारा सिलेबस, पता है अभी मुझे पता लगा है कि दूसरे कंट्रीज़ में आपका सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये आपके लिए बड़ी बात है। कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, बहुत ही मजबूत काम हो रहा है यहाँ पर। कोई किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है। 3 बार 4 बार 5 बार हम उसको देख रहे हैं, है ना? प्रोफेसर घंटा रमेश के लिए एक आप लोग अभी मत बजाइए, मैं जब आपको बता दूं तो ताली बजाइएगा। ये पुराना वाला लेके ऐसे चले आए और नया वाला ले जाके डेस्क के ऊपर अपने कंधे पर ले जाके उन्होंने वहाँ लगा दिया, एनसीटी के डेस्क पर पुराना वाला हटा दिया। ये कम काम, छोटा मोटा काम नहीं किया इन्होंने। देखिए, इससे कि हम लोगों ने रिवाइज कर दिया उसको, बिल्कुल चेंज किया है उसको। रज़ाउल्लाह साहब कितना चेंज किया हुआ है, देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक दमदार बनाया है। सो आप कमज़ोर नहीं हैं, थोड़ा सा लग जाइए इसी में। जहाँ कोई पहुँचता है वहाँ अपना लेके पोस्टर उसी के ऊपर लगा दीजिए पोस्टर, इधर वाला। सो विद दिस आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हम लोग आपको इनाम भी देने वाले हैं। जो प्रपोज़ल आया है हमारे डीडी की तरफ से वो ये है कि 2022-23 और 23-24 में जो सेंटर स्टार परफॉर्मर होंगे, उनको ये असेसमेंट हमारा नहीं होगा, ये इसके अंदर तो यही टीम असेस करेगी स्टार परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस एंड कैंपेन एंड रिजल्ट। स्टार परफॉर्मर 3 को सिलेक्ट किया जाएगा और इन तीनों को 1 लाख रुपए तक का कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इसलिए है कि वो लोग जो काम करते हैं उनका कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन होना चाहिए। रजिस्ट्रार साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपसे कह दी, प्रोफेसर शगुफ्ता मैडम ने आपको कह दिया चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हमें हटना नहीं है, हमें अपना काम करना है।
ये हमारा इरादा जो है वो अच्छा है, लेकिन ये कि एक कंपटीशन भी होना चाहिए कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, हमारा इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि हम पैसा कमाने की मशीन नहीं है। हम अपने प्रोग्राम को दूर तक ले जाने के लिए और लोगों को अच्छा रिजल्ट देने के लिए हैं। ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा विजन है, और हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। बाय द टाइम माय टर्म गेट्स ओवर, you will see minimum 1 lakh enrolled students in MANUU. इसमें आप लोग लग जाइए, और हर आदमी के ऊपर मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर यही पोइट्री से कर दूँ, इससे कि रज़ाउल्लाह साहब ने इतनी अच्छी शुरुआत की थी, तो मैंने सोचा इन्होंने भी नजम सहर जी तो बग़ैर पोइट्री के रहती नहीं, अब होना भी चाहिए। इसलिए कि सबसे पहला हक़ तो पोइट्री को खींचने का इन्हीं का है, ये कि बग़ैर इनके गज़ल ही नहीं है। देखिए, हम लोग तो एडवाइस करने में लगे रहते हैं, जो लोग वाकई पोइट्री लिख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कहाँ हुस्न है, कहाँ जमाल है, कहाँ जुल्फ़ है, कहाँ लब है, कहाँ रुखसार है। देख रहे हैं ना, वो मैं चला था जुल्फ़ों की सैर को, मुझे सांप कह के डरा दिया। ये मौलाना साहब कहेंगे ये जुल्फ़ नहीं है, तो ये तो कुछ और लग रहा है ना। तो वो बहुत तज़किरे बहुत आए हैं ना जुल्फ़ों के, तो मैंने इसलिए कहा था हक़ आपका भी है, दिल आपके है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन जो अहले एतबार हैं उनसे करो रुजू, जो अहले एतबार हैं उनसे करो रुजू, वरना सवाल चार तरफ से सताएंगे, वरना सवाल चार तरफ से सताएंगे। और कश्ती में बैठने का तसव्वुर भी मत करो, बैठने का तसव्वुर भी मत करो जब डर सता रहा है कि हम डूब जाएंगे। तो डूबने का डर मत रखिए, उभरने का रखिए एहसास और एतमाद और यकीन। इसी के साथ साथ एक बार फिर आप सब यहाँ जमा हुए, हर साल ऐसा होगा इंशाअल्लाह, और हमारी ख्वाहिश है ये गैदरिंग जो है वो बहुत रेयर गैदरिंग है, इसका फ़ायदा उठाइए। आपके जहन में जो भी सवाल हैं वो पूछिए, जो परेशानियां हैं उनको बयान कीजिए और उनका हल निकालिए कि उनका हल क्या है। इसलिए कि हम एक कोई नहीं बैठा है यहाँ पर सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, और यही क्वालिटी है इस काम की कि जब तक unless you put your heads together you cannot achieve any target. So now we have to achieve target, we have to put our heads together. So with this combination, I think it will be a wonderful combination. Thank you very much. आखिरी में मौका भी है, दस्तूर भी है कि मिसदाक मैं हमारे DDE के प्रोफेसर शेख अल्ताफ़ शाहीन को शुक्रिया की रस्म अदा करने के लिए दावत देती हूँ। Respected Vice Chancellor Syed Ainul Hassan Sir, Registrar Dr. Ishtiaq Ahmed Sir, Guest of Honor Ramesh Kanta Sir, OSD 1 Shagufta Shaheen Ma'am, Head of STRAQ Unit, Professor Najmus Seher Ma'am, all the RDs, ARDs and faculty of DDE, Assalamu Alaikum. It is with great pleasure that I am here to fulfill a very sweet duty, the duty of vote of thanks. First of all, let me extend a humble thanks to the Lord God Almighty for making this event possible. A grateful thank to Honorable VC Sir. Sir, your actions inspire us to dream more, learn more, do more, and become more, because you're giving us so much more. Which is proved by the progress of MANUU in all aspects. So a special thanks again to VC Sir for providing us with the incentive as well as the 1 lakh of grant amount to all the RDs, all the centers. RDs and ARDs, okay. Sincere thanks to Registrar Sir for doing things and getting things done. He's really a hard worker, and I think a part of the progress of MANUU, he is also responsible for that. A warm thanks to Ramesh Kanta Sir, because he knows that investment in knowledge pays the best interest. And Sir has invested in knowledge, and we are all over here reaping the interest by having him as an advisor for DDE.
and a small installment of that interest was received today in terms of his speech. So thank you, sir. I also thank OSD1 Professor Shagufta Shaheen ma'am, because she inspires us by her mere presence. A heartfelt thanks to Director DDE Razaullah Khan sir. He believes in translating vision into reality. And I think one example of that was the release of the manual and the program guides today. And I think we'll have many more such releases in future and many more such meetings in future. So thank you, sir, for being a visionary. A big thanks to the head of STRAK unit and the convener of this program, Professor Najmus Seher ma'am, for making this program possible. A hearty thanks to all the RDs, ARDs who have come from various parts of the country, and I hope that you will participate wholeheartedly in this 2-day workshop and go back enriched, enlightened, contented, and satisfied that all your doubts have been clarified. A special thanks to all the teaching, non-teaching staff of DDE MANUU for making this program possible and successful. I'm also extending a special thanks to IMC for the technical support and CPDUMT for providing us with this cool and comfortable auditorium. Thanks to one and all once again. Thank you. अपने रिवायत के मुताबिक इख्तिताम के लिए नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे इस 2 रोज़ा वर्कशॉप में और इस 2 रोज़ा वर्कशॉप के दूसरे टेक्निकल सेशन में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस हमारे हरदिल अज़ीज़ डायरेक्टर प्रोफेसर रज़ाउल्लाह ख़ान साहब, प्रोफेसर गुलफिशा हबीब साहिबा, प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब, प्रोफेसर घंटा रमेश साहब, प्रोफेसर वेंकैया साहब, तमाम रीजनल सेंटर्स के रीजनल डायरेक्टर्स, सब रीजनल डायरेक्टर्स और आज के इस दूसरे सेशन के मेहमान मुकर्रिर प्रोफेसर एस जिलानी साहब का बिलखुसूस मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इल्तमास करता हूँ प्रोफेसर एस जिलानी साहब से कि वो साइनसी पर तशरीफ़ लाएं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ में प्रोफेसर एस जिलानी साहब जुड़े हैं, जो एक कौमी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शख्सियत के हामिल है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन्होंने अपने ख़िदमात से पूरे तालीमी निज़ाम को बखूबी अंदाज़ में संवारा है। अगर मैं इनका मुख्तसर तारुफ़ पेश करने की कोशिश अगर करूं तो मैं उस कोशिश के काबिल बिल्कुल ही नहीं, काफ़ी जामे इनका तारुफ़ होगा। इन्होंने गैर मामूली अंदाज़ में अपने ख़िदमात अंजाम दिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। जहाँ तक के तालीमी काबिलियत की बात है, सर का मैं सिर्फ PhD से स्टार्ट करूँगा, वैसे बहुत ज़्यादा है। सर का जो PhD हुआ है किया है सर ने 1989 में सर का PhD उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने तकमील किया। सर बहैसियत मेंबर्स
चेयरपर्सन, मुख्तलिफ़ कमिटीज़ पर सर ने काम किया है। बिलखुसूस अगर मैं गिनवाता चलूँ तो कुछ चंद मैंने उसमें से नोट किए हैं। सर फॉर्मर साइंटिस्ट एज अ फॉर्मर साइंटिस्ट सर ने काम किया है इसरो के लिए। सर फॉर्मर हेड भी रहे हैं यूजीसी रीजनल ऑफिस हैदराबाद और बेंगलोर के लिए। सर फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी यूजीसी भी रहे हैं। सर ने जो है तो ख़ास तौर पर अगर मैं कहता चलूँ यहाँ पर कि जहाँ तक मानू का सवाल है तो सर ने 2009 तक COE के भी फ़राइज़ अंजाम दिए हैं मानू के लिए, और फिलवक्त सर जो है हमारे सीका के मेंबर भी हैं। जहाँ तक सर के पब्लिकेशन की बात करूँ बहुत जामे हैं, और मैं बिल्कुल शॉक हो गया था चंद चीज़ें देखकर। सर ने अब तक 9 बुक्स सर के पब्लिश हो चुके हैं। 70 से ज़ायद जो है तो सर के रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स यानी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शाये हो चुके हैं। और सबसे मज़ीद और दिलचस्प बात ये थी कि सर ने तकरीबन 1900 से ज़ायद सर ने जो है तो लेक्चर्स अब तक डिलीवर कर चुके हैं। तो ये बहुत ही काबिल सताइश बात है हमारे लिए। तो अगली कार्रवाई के लिए मैं हमारे सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर काजी ज़ियाउल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि रीजनल डायरेक्टर है रीजनल सेंटर बेंगलोर के, कि वो सर का गुलाए अक़ीदत और शाल पोशी करें। बहुत शुक्रिया सर। ज़्यादा वक्त मैं आपके दरमियान और सर के दरमियान हायल ना होते हुए बस एक शेर से सर को दावत दे रहा हूँ कि ये कौन आया रोशन हो गई महफ़िल जिसके नाम से, ये कौन आया रोशन हो गई महफ़िल जिसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। सर प्लीज़। शुक्रिया वसीम भाई। मेरे अज़ीज़ जिगर साथियों, जैसा कि मानू के डिस्टेंस स्टडी के फासिलाती तालीम के डायरेक्टर हमारे रज़ाउल्लाह खान साहब, मेरे पुराने साथियों, सीनियर एक्सपर्ट्स, सीनियर एजुकेशनलिस्ट, हमारे प्रोफेसर वेंकैया जी, कई साल उनसे जो है हम लोग साथ मिलते चलते रहे कई कमेटियों में, और हमारे घंटा रमेश जी, वो भी हमारे एजुकेशनलिस्ट है, और तमाम रीजनल डायरेक्टर्स, क्योंकि मैं 2007 से लेकर 9 तक था मैं, तो रीजनल डायरेक्टर शेख बरकत जी और जो हमारे जिया भाई और जो है तमाम रीजनल डायरेक्टर्स हैं, उनका नाम नहीं ले सक रहा हूँ, मुश्ताक अहमद जी, और हमारे ख़ास हैदराबाद के जो है मज़र खादरी साहब और वालेकुम सलाम। तो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के सीनियर प्रोफेसर मुल्ला साहब, गुलफिशा हबीब जी, साथियाँ पूरे थे हमारे। तो एक बार सबको जो इस्तकबाल करते हुए, वेलकम करते हुए, मुबारक बोलते हुए, तो इस तरह का जो ओरिएंटेशन वर्कशॉप और तमाम हमारे साथियों रीजनल डायरेक्टर जिसका नाम नहीं बोल सका, तो आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रेजेंटेशन वक्त कम है और प्रेजेंटेशन 35 मिनट में कंप्लीट करना है, तो उससे पहले मैं सिर्फ़ एक कुरान की जो है एक अल्फाज से शुरू करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि लव अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लरैतहु गासियन मुतसद्दियन कसियातिल्लाहि व तिलकल अमसालु निस्रिबल लिन्नासि यतफक्करून। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान को हम पहाड़ पे नाजिल फरमाते हैं, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। उस कलाम को आपको नरमी करके जो है, जिस कलाम को जो है जो जिन्नात करीब तक नहीं आ सकते, जिस कलाम को जो है फरिश्ते पढ़ नहीं सकते, उस कलाम को जो है आपको घरों में, आपके हाथों में, आपके मोबाइलों में पहुंचा, तो उस कुदरत के नाम से याद करते हुए शुरू करता हूँ। माशाल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की, समझाने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो आइए, तो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड वर्चुअल लर्निंग से तकरीबन 15 साल से हूँ मैं। उससे पहले जैसे कि फरमाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में सदर्न रीजनल डायरेक्टर था पूरे 4 स्टेटों का। तो इस सिलसिले में मैं यही बोलना चाह रहा कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आज तो मैं सुना था पिछले सेशनों में कि मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि मानू को मैं जानता हूँ 1998 से। ऐसे 4 यूनिवर्सिटीज़ है जिनको गवर्नमेंट एक ख़ास मकसद से उसको एस्टाब्लिश किया था। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महाविद्यालय वार्धा। ये 4 यूनिवर्सिटी एक ही बार कायम हुए थे।
तो इस यूनिवर्सिटी हाउ दे हैव स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ द मेजर इंटेंशन, वाई द गवर्नमेंट इज़ एनकरेजिंग द लैंग्वेज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस. सो देर इज़ ए बिग स्टोरी ऑन बिहाइंड इट. फातिमी साहब थे, जब अर्जुन सिंह साहब थे, ख़ास मकसद से जो है इस यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने एस्टाब्लिशमेंट किया. तो उसका रीज़न क्या है मैं प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, क्योंकि व्हाट इज़ द स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन. अब से हम करिकुलम बना रहे हैं, कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग. इसका वजह क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट कमिंग. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ये तो डिस्टेंस एजुकेशन आई सी. तो डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ आर हैविंग 5 टाइप्स. इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि 120 इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है. कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल? IIT, IIMs एंड आइसर्स. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन 53 है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, व्हाट इज़ मेंट बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी, 120 है. डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि खाना लंच करके आए, मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आपको एक्टिव रखूँ. व्हाट इज़ मेंट बाय डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या होता साहब? हाँ, तो हाँ, थोड़ा क्या है, एनी यूनिवर्सिटी, यू एंड आई कैनॉट स्टार्ट यूनिवर्सिटी लाइक कॉलेज. द यूनिवर्सिटी कैन बी एस्टाब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इधर असेंबली में पास होना चाहिए और बाय दिस पार्लियामेंट में पास होना चाहिए. इसके मद्देनज़र में एक और है, UGC सेक्शन 3 एक्ट कहता है. UGC एक्ट सेक्शन 3 कहता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इज सच ए यूनिवर्सिटी. डेफिनेशन ये है कि दोज इंस्टीट्यूशन विच आर ऑफरिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च, दोज हु आर डूइंग ए गुड रिसर्च एंड बट दे आर नॉट empowered टू अवार्ड डिग्रीज. They are not empowered to award degrees. Such facility is given as a deemed university through gazette notification. बगैर पार्लियामेंट जाते हुए, बगैर असेंबली जाते हुए जो है डायरेक्टली दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. और उसमें एक और क्लास भी है, डी नोवा कैटेगरी, वो बात अलग है. तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये तो जानते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सब बहुत है. इतने यूनिवर्सिटीज़ क्यों ला रहे? मानू को क्यों लाए, एमफ्लो को क्यों लाए, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को क्यों लाए, हिंदी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों लाए? द नेक्स्ट आई विल टेल. देखिए, एज ऑन डेट नियरली नंबर तो बढ़ते रहेंगे. सो एज ऑन डेट वी आर हैविंग 910 यूनिवर्सिटीज़, 41,000 कॉलेजेस, बट दिस एनरोलमेंट इज ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इज 27, यानी कि 100 में सिर्फ 27% बच्चे जो है हायर एजुकेशन पे आ रहे. दिस इज़ द मोस्ट कंसर्न. तकरीबन 3 NEP आए, तो 3 NEP आने के बावजूद भी जो है 70 ईयर से वी कुड एबल टू टच द स्टूडेंट्स ओनली 27%. तो माई गुरु कस्तूरी रंगन, अंडर हुम आई स्टार्टेड माई इसरो करियर, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया NEP 2020 11 मेंबर कमेटी की, इंडिया शुड कैच होल्ड ऑफ 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय द ईयर 2035. जब 70 साल में न हो सका, 15 साल में कैसा हो सकता? दिस अ बिग चैलेंज. हाउ इज़ इट पॉसिबल एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन? स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे? सो मैंने जब UGC में था रीजनल ऑफिस में, देन वी कंडक्टेड ए सर्वे. आई वाज एड्रेसिंग वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस तेलंगाना में, तो वहाँ पे भी ये बोला कि भाई वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट स्टूडेंट्स, वी आर ओनली डिज़ाइनिंग आवर प्रोग्राम्स. तो 10 पॉइंट्स फार्मूला बनाए थे हम लोग एंड वी सेंड टू द ऑल द कॉलेजेस. फर्स्ट पॉइंट इट इज़ वेदर स्टूडेंट वांट फ्री courses, whether the student want good infrastructure, whether the student want good quality of education, whether the student want library facility, good faculty, as a 10 point. But the students, majority of the students, they have touched only 2 points. They have touched only 2. Sir, we are ready to invest money. We are ready to invest 70 lakhs, 80 lakhs to go to Florida University or the Massachusetts Institute of Technology or Stanford University. But not the time. When we are investing 4 years of time, we want what is guaranteed or guaranteed career and placement. This is the feedback. तो ये फीडबैक होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या चाहता है, हम किस तरह के कोर्सेस ला रहे हैं उनको, वेदर आवर कोर्सेस आर सूटेबल आर नॉट. तो इसलिए कि हम लोग सर्वे करे, फिर उस बेसिस में आर टुडे दे आर गोइंग टू ऑल अब्रॉड. USA में जो है 70% GR है, हमारे पास 27. नाउ वी आर हैविंग ग्लोबल एवरेज इज 29%. वी आर लेसर दैन ग्लोबल एवरेज. इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब गवर्नमेंट यही सवाल कर रहा है कि भाई आपको 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिए और 120 IITs दिए आपको, और इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे रहे, उसके बावजूद भी जो है ग्रॉस एनरोलमेंट नहीं आ रहा. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आ रहा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दे आर गोइंग लैंड. चिकागो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी लैंडेड इन दिल्ली और मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर दे आर गोइंग टू कम. वो लोग कह रहे हैं कि सब हमको फंड्स नहीं चाहिए और रिसर्च सपोर्ट नहीं चाहिए, जस्ट गिव अस स्टैम्प एंड वी विल इंक्रीज योर GR by 2035. So what is the confidence they are having? How they are going to attract the student?
and what is the confidence we are lacking. So this is the main thing concept है कि otherwise survival of the fittest, otherwise हम काम नहीं करेंगे, हम enrollment नहीं करेंगे 2035, difficulty to survive. This already government of India started 30% go for self revenue. Only 70% budget will give to the institutions, central institutions. So next slide please. तो इस तरह से जो है सैम पेट्रोडा हैज़ रिकमेंडेड 1500 यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इज इट वी रिक्वायर्ड? उस टाइम में जो है देर आर मोर देन 840 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 320,000 सीट्स आर देयर, हाफ द सीट्स आर गोइंग वैकेंट. तो डू वी नीड रियली द 1500? नो, हाफ द सीट्स आर गोइंग वैकेंट. So there is a something expectation from the students. So that's why students want a guaranteed career placement, and other option why they are going abroad. आज जर्मनी जा रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, कनाडा जा रहे, and they are going USA जा रहे, तो बड़ी तादाद में जा रहे. And then they want learn while you earn. Learn, the second concept what they have taken is learn while you earn. So this is what they want to do. So how best possible you can see. So these are the two things which are coming. So GR, though we are going for more number of institutions, there is no possibility. Government want to go digital university. अभी UGC chairman announced किया, we will start digital universities. So possibilities is there, but how we can convince? NASSCOM is saying that we don't have that 80% of the engineering graduates are not fit for jobs, suitable jobs. NASSCOM is saying engineering graduates आज कहता है कि सर SQL आता आपको नहीं आता, सब ट्रेनिंग करें तो करेंगे. Do you know this .NET? I don't know sir, if you train I will do. We are carrying paper degrees. So where is the skill component, hands-on training, where is that? So government of India has come out wonderful concept, skill development center, 39 skill development centers are there who are giving separate certificates in every area. So huge number of videos are there, you can make use of that. Next. So various commissions are there, both commissions. So third we are having the major reforms was Kothari Commission, uniform 10+2+3. Then Meerut University, Ambedkar University, all these they started. Delhi University, all distance education, I don't want to cover much. Open University is 14 and the distance education 200, but the number is coming down as of that 143 ODL institutions, dual mode institutions are there. Why it is coming, that is a different story, big story, we will discuss later. Next. So this is a gradual increase of the ODL institutions. Next. So now you understood कि क्यों मानू और एफ्लू और संस्कृत यूनिवर्सिटी और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय स्टार्ट किया. The gross enrollment ratio is only 27%, which is a lesser than the global average, and where we want to give developed nation by the 2020 तो चले गया, but still we are unable to touch that developed nation concept, becoming a superpower aspiring that we need to cross at least 50% of the GER. So that's why government of India is saying that multiple exit, multiple entry, liberal education, any choice, any option. आप कंप्यूटर के साथ जो है म्यूजिक ले सकते हैं, फिलासफी ले सकते हैं. First year you can study in MANUU, second year you can study in HSU, third year you can study in Delhi University. So various concept challenges may be different, but the flexibility they are giving, that the main concept this. Our major concept है by 2030 no college should present. All colleges should become degree awarding institutions. All colleges by 2030, another 10 years, 7 years में, they should become degree or perform or perish. They should be, or they become cluster university. They should become adjoined with other cluster university. That is the option they are coming out. So it's a very tough measures are coming. Foreign universities are coming, and then all these private universities are rapidly coming. Deemed universities are coming. So we have to be very cautious, especially the regional centers, regional directors. MANUU expectation is a large number of the enrollment number, but still we are facing difficulty in crossing in lakhs number. Only we are projecting in thousands number. So once we touch the lakhs number, probably our GR will increase, reaching the unreached areas. Next. So these are the new regulations you have studied. I need not tell. 60% self-learning materials होना चाहिए, और ऑनलाइन मोड में भी इवन मिनिमम पार्टिसिपेशन 75% अटेंडेंस होना चाहिए. कंटिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल मैक्सिमम रेगुलेशन आई एम टेलिंग 30 और 70 होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज द NAAC क्राइटेरिया. इस नेक्स्ट स्लाइड. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए यू कैन अडॉप्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सेपरेट NAAC फॉर ODL इंस्टीट्यूशन नाउ.
Because MANUU is a dual mode university, it is not open university. So you have to go for separately for distance education, guidelines are there. Option they give till what time they give for that together you go, that's a different concept. But if at all you want to go is a singly to the NAC grading, where you touch, that is also very important. Quality standard guidelines are available in the NAC website for dual mode universities. Next. ODL online, what is this concept? NEP में एक और नया concept आया. Now, because of this flexible learning, they want to say, next slide कर दीजिए, then I will come. This next slide. हाँ. Next slide. Next. हाँ. So coming to the first student support services हम complete कर देंगे. Student support services, what we are doing is, क्योंकि मैं अभी देखा था, I was just about to listen, anybody want to say कि digital marketing कभी सुना का वो शब्द मैं नहीं सुना, मैं सुबह में कोई बोले होंगे. Now पेपर में जनरली विल डू व्हाट विल डू इज़ मिस्टेक नोटिफिकेशन बोलते हैं साहब, एक नेशनल टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर, एक लोकल हिंदी पेपर और लोकल रीजनल पेपर, पूरा 15 लाख का खर्चा हो जाता है, 20 लाख या 50 लाख खर्चा हो जाता है. बट अल्टीमेटली हु इज़ गोइंग टू सी दिस पेपर? नाउअडेज आफ्टर कोविड पैंडमिक नोबडी इज सीइंग दिस पेपर. अभी हमारे पास भी 15 लाख 20 लाख स्पेंड कर रहे 3 पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड लोकल रीजनल पेपर, तेलुगु पेपर्स एंड हिंदी पेपर्स में कर रहे, सियासत में डाल रहे. But there is no people are coming, nobody is having time to see the papers. We have to go different type of strategic marketing called digital marketing, which is a cost effective, very less amount, where bulk SMS, bulk emails, Facebook, Gmail, all this they will do. There are some expertise organizations are there, they will say आपको within 10 days में we will give 10,000 registration, आप उनको पीछे पड़िए and get it registration, and the cost is very less. And even if you are trained, you can do that digital marketing. You need not invest money also. With zero investment, you can do it. So digital marketing में क्या होता है? The biggest instrument students are having is mobile. So instant messages, instant mobiles, even internet they may not show, but mobile तो सुबह से I think 1000 मरतबा देखते होंगे अपन. So they will see instant messages. MANUU is offering this type of courses. So then it is a very lesser rate. Maybe 5,000 में you will get 5 lakh messages. 5,000 rupees में. Then email system. Up to this you can do bulk emails through the government of India, so you can send bulk emails. Then Facebook. So all these people, I request the director also to look into this digital marketing instead of even though you go outside, but train some people how to do digital marketing, and there is effective impact is there. We are doing artificial intelligence, machine learning, a course launch किया मैंने. Just within span of 1 month, 3,000 registrations have come, with a fee structure of 1 lakh. And when we have admitted 1,500, then again pressure is coming that, sir, we want to join. So second batch हमने शुरू किया. So that's why I'm telling digital marketing plays, because many of the people, students, 73% they are not coming to higher education. Definitely you can target them by sending this digital marketing in the type of notification and marketing. Then what is the next step is, after application के बाद registration करेगा student, उसके बाद जो है online data आ जाएगा, how many they have applied and how many application come, how many documents, then you will do screening. After screening you will shortlist and send the admission letter for the payment. वहाँ पे 3,000 आ गए, यहाँ पे 1,500 ड्रॉप हो गए, फिर then they will be first semester fee they will be only 700 people. Now जितने भी एडमिशन गए सारे may not pay, they may fee only few. Again you have to contact them. Once you get the database, you have to send them bulk SMS. Send them, sir, this last date is extended, you have to pay the fee within this step, otherwise your admission will be closed. So that this way you can do admissions में last date extend करते हुए. Then you have to give students grievance continuous 24/7 information. बच्चों के लिए हम exclusively 1 person रखे, मोबाइल है, he will attend round the clock 24/7 and he will say, बच्चे ज़्यादा पूछते हैं साहब इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता, इसमें किस तरह एग्ज़ाम कर सकते हैं हम लोग. तो उसका इन्फॉर्मेशन भी they want. Once they are convinced, then only they can fee the fee. So that's why instant they should be in a position to clarify student. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट को कह सकते हैं कि भाई आपको एप्लीकेशन जमा नहीं हो रहा ऑनलाइन में, इफ़ यू आर डिफिकल्टी वी विल अटैच टू अनदर पर्सन. फिर अगर नहीं आ रहा बच्चा तो उसको कांटेक्ट करना चाहिए. दिस इज क्योंकि एग्जाम्पल मैंने देखा IIT चेन्नई, दे आर डूइंग 1 year 6 months प्रोग्राम पेंटिलियम के साथ.
Last 2 months में देख रहा हूँ repeated messages are coming. IIT Chennai is offering this data science program. Join if you have any doubts. फिर अगर आप टच करें artificial intelligence, then mobile calls will come to him. Why you are not joining? What is the difficulty? What is the constraint? So this way student-friendly approach is very much required. Then only student will come to the admission. IIT Madras is doing this. शायद आप email में देखे होंगे. Then why not we do? So student education at the doorsteps. We have to give the services at the doorsteps. So all this then नहीं ऊपर जाइए next slide. This is very important, I am telling. So you have to clarify what is the examination, evaluation, career in the beginning broadly. Then you will go for admission or regretted list. If it is a qualified, regretted list, admission. Then after admission, fee pay करने के बाद, then what you will do? You will send the study material, soft copy or hard copy. You will post the study material and उसको पढ़ने के लिए, read करने के लिए, what you will do? You will send some assignments. So student will be busy for 2 months for the assignments. Then he will have doubts. Then he will clarify whether it is assignment submitted. Then he will come. Then he will submit in a descriptive type through online or portal or whatever portal you are having. Then contact classes also, you will be how you will be conducting that schedule timely examinations, how you will be conducting semester wise. Now semester wise is a mandatory now. You have to conduct examination. All these information should be passed on to the students. Certification, grievance redressal system is a very, very important. क्योंकि अभी एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट है, समर्थ पोर्टल में आप जा रहे हैं, एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट, डिजी लॉकर है, NAD है, National Academy Depository is there. So all are going digital tracking. Certificate is also no hard copy printing. Everything is a digital form. So people should be trained and aware, create awareness कि भाई certificate नहीं आएगा डिजी लॉकर में आपको, you have to start this mobile, email ID and everything. They have to register under academic banking credit portal. Next. So these are all the routine things. I will not explain. Career guidance, information, library, AV, conducting of examination. Next. Tutorial, regional center, study center. This is a MANUU concept, I know. Work study center, all this you know. Next. Study centers, they plays very important role, and regional centers will have complete monitoring on that, how they are getting feedback, everything they should have. Connectivity, they should be modernized, the technology to reach them. SMS, instant SMS. We don't have permitted any study centers or any regional centers. But we have such a mechanism that every student instantly get messages, time to time update. Contact classes schedule is going to start, email send, kindly see your email. Examination schedule is going to be like this, see the application form. तो उससे क्या होता है, बच्चे टाइम टू टाइम वी आर अपडेटिंग इन एडवांस. जैसे अभी डायरेक्टर साहब करेंगे, एडवांस में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, सो दैट लास्ट डेट खत्म हो रहा है, यू शुड सेंड देम 3 रिमाइंडर्स. पेमेंट ऑफ फी, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर यू सेंड इट कि आपका फीस करीब आ रहा. व्हेन IIT चेन्नई इज डूइंग लाइक दिस, व्हाई नॉट वी डू? सो एग्जामिनेशन में भी एटलीस्ट यू शेड 3 रिमाइंडर्स. Reminder 1, 2, 3. Then only the student will be alert and he could come to you. Next. Then functions of the regular study centers, you have to do the regular counseling, practical, audio, video, and receive the assignments, maintenance of the records, and then weekly feedback, reports is there, and university to give them. There should be a perfect network is there, study center, regional center, and the main center. So that system should be maintained, and every center should be aware, भाई फलाना मन में ये feedback देना चाहिए, फलाना week में ये देना चाहिए. So they should have a clear-cut timetable so that they can able to. So with a staff of 10 people, we are handling the students of global level. Our purview is a global level. Most of the students, because our courses, because of the quality standards, World Educational Services, New York and Toronto has come forward. So World Educational Services, every day, every week we will get that 3 or 5 verification, transcript verification. साहब ये बच्चा आपके पास किया नहीं, he applied for a job in Toronto and whether he is cleared all this exam. Then instantly we are giving a reply. Support services भी देना चाहिए. So even Germany say they are coming. So all this we are getting the students. Of course language is different. That is one of the reason I understood definitely. But technology is same. Technology, communication, mode is everything same. You can make use that whatever you are having. Because I know when I was there in MANUU, I know there was one center was supposed to start in London also, one sub-center. That was also possible, but somehow it could not happen.
And whatever media center equipment, that time we bought from the Sony company, original company, from the Hong Kong. So next. So academic bank, this is a very important. Students ko this will attract a lot. Academic banking of credits framework is there. So once they are starting this suppose 3-year undergraduation they are doing. And how he will do? He will first year he will do MA, suppose if he is doing the MA Sociology. MA Sociology first year यहाँ पे पढ़ लिया, second year he want to join MA Sociology HSU में. सब वहाँ पे एडमिशन कैसा करना और यहाँ से बच्चों को देंगे. मानू से अगर कोई जा रहा तो देते क्या HSU वाले? Definitely. There is a possibility because UGC chairman said that every institution should have entrance examination at every year. Conduct examination, first year also you conduct entrance and second year also you conduct. Then they are what? NCRF, National Credit Framework, uniformity in credits. Credit should be uniformity, 2 semesters है. तो 1 साल का जो 2 semesters है 6 महीने के, उसमें each semester you are having 20 plus 20 credits. That becomes 40 credits. So if he has a 40 credits, get a certification of DigiLocker and accumulated in the ABC portal, then second he want to go to HCU or Usmania University, then he will say produce that certificate, sir मैंने तो 40 credit कर लिया और मैंने तो यहाँ पे इस course कर लिया और इसलिए से second year admission ठीक है, you come for eligibility. If you have done 38, then they will say नहीं बाकी 2 credit करके आइए, फिर बाद में आपको परमिशन देंगे एंट्रेंस. सो दैट्स वाई नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क दिया विच इज़ गिविंग इट्स 110 पेजेस डॉक्यूमेंट सर्कुलेटेड टू UGC, AICT एवरीवेयर. काइंडली गो थ्रू इट. फर्स्ट ईयर में हाउ मेनी कर. अब पॉइंट आएगा सब क्रेडिट बता दिए, अपने सेमिस्टर बता दिए. व्हाट इज़ मेंट बाय क्रेडिट? क्रेडिट को कैसा क्वान्टिफाई करना? 40, 30 क्या होता है? हाँ, तो क्रेडिट दे सेट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 30 आवर्स ऑफ लर्निंग इनपुट्स, 15 hours of the face-to-face learning. So 30 hours यानी कि reading, self-learning material, examination, home assignments, everything will be cumulative. Then you will calculate, you have to calculate in that way. So 6, अगर suppose आपका 1 साल का MA फर्स्ट ईयर है, 1 साल में क्या होना चाहिए? 2 सेमेस्टर तो होंगे, तो 2 सेमेस्टर में then you will say 40 क्रेडिट कैसा बनता है? तो then you have to call it 40 into 30, 1200 hours of learning inputs is required for a year. सेमेस्टर में 600, 20 into 30, 600. तो वो फार्मूला आएगा. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. सो दे कैन मूव मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल, कहीं से भी जा सकता है, कहीं पे मिनिमम 40 होना चाहिए. ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता. साहब अगर मैं 2 क्रेडिट का कोर्स ऑफर करूँगा क्या वो भी ABC में जाएगा? दिस इज नॉट, दिस इज नॉट. एज ऑन डेट दे हैव मेंशन्ड ओनली स्वयं पोर्टल्स, दे आर नॉट मेंशन्ड टू. Only in the regular 1 year में they are said first year if they are exiting they are called certificate and diploma, second year they are exiting they are called PG diploma, third year they are called it as a undergraduation certificate, fourth year called it is a honors, BA honors, and fourth year if you are done directly he can go to lateral PG or any other. Second year PG पे जा सकता. So that's why ultimately 40 credits for 1 year, 80 credits for 2 years, 120 credits for 3 years and 160 credits for 4 years. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अब ये मामला आ गया तो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स आर वेरी इजी. सो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज देयर, देन एकेडमिक बैंक अकाउंट डिजिटल फॉर्म, देन वी आल्सो से दैट स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी शैल बी स्वयं NPTEL. ये जो 2 क्रेडिट्स है, 4 क्रेडिट्स है. इफ ए स्टूडेंट हैज डन, इट इज क्लियरली सेड द ABC रेगुलेशन दैट स्वयं NPTEL, VLab, ऑल दिस courses where they have done smaller level credits 2, 3, 4 that can also be stored in the academic bank credit. ये academic bank credit कैसा open होता सब? You have to send a circular that there is a portal ABC, you open that account students को and ask him to register, and your examination branch will upload the examination data and he will have user ID password. Time to time he see that how many credits are there in my account, whether तो अभी तो 20 हो गए, next year next semester में 40, next 80. तो जैसा 80 हो गया then he can ask for a PG. Next slide please. So student shall be requested to earn at least 50. हाँ, अब आएगा सब 1 साल तो मानू में कर लिया, 1 साल तो HCU में कर लिया और 1 साल तो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया. ना हु विल गिव द डिग्री? ये भी मसला आता ना, हु विल गिव दैट? तो उसमें रेगुलेशन में दे सेड वेयर एवर विच यूनिवर्सिटी हैज़ डन मोर क्रेडिट 50% एंड अबव दैट यूनिवर्सिटी कैन अवॉर्ड द डिग्री. सो वो शुरू में आप बता दे सकते कि इफ एट ऑल वी वांट टू गेट HCU देन एटलीस्ट यू शुड डू 60 क्रेडिट्स, देन ही विल गेट इट.
So that's why he should get more than 50% of the required degree, 80 credits say. Then at least you should do 60, 40 say 50 or 60, roundabout. Then SU will come and give, yes, you have done more credit from we are empowered. Sab deny kare, no, there is no, because every 250 institutions registered and given undertaking to the Ministry of HRD that we will abide by the ABC Bank credit guidelines. So कोई university deny नहीं कर सकता. Next. तो steps for new course, कोई भी new course करना चाहता है तो what we will do is program committee होता है initial में, will design whether this program how it will be useful. Sustainable, UGC circular दिया, offered only demand based program, whether this program is demand based. How you will do? First it will come from the program committee, that is purely academic. Then it comes syllabus and self-learning material preparation again, then comes to the school board, then comes to the academic council, and then UGC will be intimating, the intimation will be given if it is empowered to award the degree. Next. So these are the credits. अभी हमने बताया कि 240 credits for 8 credits, 8 system multiplied. Next. Next slide please. This is the calculation जो हमने बनाया था कि 40 into 30 1200 credits and 20 into 30 600 credits for one semester. 2 semester it is a 1200 credit. Next. Then e-learning, this is also very important. I want to brought it. सब हम तो online पढ़ा रहे हैं, online course. Suppose if I send PDF, can it be called e-learning? No. Suppose if मैंने audio record करके भेजा, can it be called e-learning? No. If I send only multimedia, no. They said 4 quadrant approach होना चाहिए. MHRD guidelines says that there should be 4 quadrant. You should have tutorial which, then you should have presentation, self-instruction material होना चाहिए, then discussion forum होना चाहिए, and last 4th credit is assessment होना चाहिए. Next credit. So all this 100% online. Next slide please. So this is the cycle of the things what we are doing, right from notification to admissions, then payment of fee, then study material, then coordinators, everything, then we will come to the 1 year cycle. 2 semesters may they break. So we have that cycle, very perfectly timed cycle, and student will know and staff will know, and all our coordinators also will be aware. Next slide. Then all these steps are there for examination. We have 3 sets of questions randomly. Even director also doesn't know which question paper is going. 3 out of 3 we randomly select last moment and we'll send it to them password. So nobody knows what is coming. So such a confidential, transparent way we are going. Next, 30 minutes before it will open all this examination procedure. Next, intimation of the students conducting examination, all this process we will do. All this process 30 minutes before only examination. Question paper will give. Next slide please. Proctored examination. If you are conducting online, it is a proctored. Proctored means virtual invigilation is there. Then it is called recorded, not of the multiple choice. Next. ये थोड़ा रखिए. This is one. I will take half minute here. Now online we have said online material, PDF, and everything is coming. We are seeing. Now the another advanced stage is coming called metaverse. Metaverse where you don't require self-learning material. It is creating the content and it is giving feeling, that sensing of that atmosphere. Example मैं बताऊंगा. So it is called it as a metaverse, and multiverse is highly random and contain different virtual worlds. Next slide please. It makes augmented reality and virtual reality. It makes highly motivated students, and also it is a virtual reality. That means वास्तविकता. जो आप physical आ रहा है, the same thing will be there for the virtual also. Next slide please. So the images है. Then next slide. So this is called, it is a 3-dimensional picture. Next. So this is what they will get whenever they are seeing. They will feel the 3-dimensional in the metaverse mein, and feeling that sensational immediately. Image will catch immediately by your brain than the text. Reading एक बार, the 10 बार is equal to 1 time of seeing the image. Next. So this is also virtual world. It is images. So whenever you are feeling that we are doing some sociological joint family system, then immediately you feel that you are in that world. Next slide. So all these sciences, maybe it is coming virtual world. It is coming, that is metaverse. Next stage of learning process. Next slide. Chemistry class will be like this. Next. So that's why evolution is starting from small paper to the various systems. So we are accepting this evolution. Next slide please. Fastly will go. Next slide, blackboard to this. Then NPTEL is a funding for all your online and e-learning material. Very good budget is available.
national program technology enhanced learning. Mangala Sundaram is in charge. So MHRD is liberally funding for all your e-content. Next slide, please. Next slide. So content mein what you do is three concepts: automation, content development, and LMS. So once you have automation means database of student, and content development four quadrant, and LMS connecting the teachers and student. Next. Next. So all these four quadrant: textual matter, multimedia, Wikipedia, assessment. Next. 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 So this ultimately we are taking you to the virtual university because GER is very, very important. Next slide, please. Okay. Next slide. So these are the concepts we are doing this. With this, I think we will become thoda slide shows ke liye HCU ka heritage building. It is a just will show. You can say this is a heritage building. Next slide. Next. This is a backside 3, and we are not only maintaining the soft copies, we are also maintaining hard copy for the verification of the 20 years record. 20 साल के बाद भी स्टूडेंट जमा कर रहा वेरिफिकेशन के लिए आ रहा. सो वी आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट. सो ऑल दिस वी आर मेंटेनिंग. नेक्स्ट. So far we have provided 25,000 participants, and 25% got placement, 25% got incentives in their increment, and 20% went to the USA. They are teaching there, and then 30% knowledge and skill. Next. Last I think 3 or 4 slides. So we have touched all the areas of the what is contribution of higher education to the society. We have taken up courses: rural development, agricultural, health, cyber laws, human rights, herbal medicine, library, business management, energy management. All the areas we have touched and contributing. Next. So all these programs, our World Educational Services is personally came, and without any fees they have recognized our program. Next slide, please. So all these quality standards. Next. Next. We have collaborated with joint programs. One is ICR, NAR, Ministry of Agriculture, NAR, NIRD, Apollos, LV Prasad, BSNL, all these institutions to provide a double skill program for those institutions. Next slide, please. So students are benefited all these features. Next slide, please. So all these next areas we covered, all these are each program we are having exclusive coordinators at the level of professor. Next slide, please. So all our technology is student registration, administration, all yes, academic activity, student evaluation, descriptive and MCQ. So that's why it is also yes. Next. So our programs are recognized by UGC, AICT and World Educational Services, New York, Toronto, and it is we got of course National Consultative member also. Next slide, please. So these are our facilities. Next. ये पीछे जा रहा, आगे चलिए. Yes. Next. These are our participants. So like this, we have been contributing to the society, not only to the society, but expectations of the government that what is how best we can contribute by 2035 to increase the GER from 27% to the 50% as per the NEP 2020 recommendation. So like this, the expectation of the MANUU is also very high, very, very high. So we hope that you can also project yourself in the national level that we have contributed this many lakhs of the students. So with all these things, I once again am thankful to the Honorable Vice Chancellor and the Director Razaullah Khan Sahab and entire his team, and wish you all the best to my colleagues and regional directors and all these people. Once again, all the best. Thank you all. All this. Wakar dawana. Alhamdulillah. बेहद शुक्रिया सर. अभी आपसे मुखातिब थे प्रोफेसर एस जिलानी साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड वर्चुअल लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. सर का काफ़ी जामे ये खिताब रहा है और निज़ाम फ़ासलाती तालीम की तारीख़ से लेकर उसके तमाम पहलुओं को सर ने छूने की कोशिश की है. बिलखुसूस स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पर भी ज़ोर दिया, और मैं यकीन दिलाता हूँ सर कि हमारे जो शुरका है वो तमाम शुरका आपकी तमाम बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे. मैं शुक्रिया की रस्म के लिए मदऊ करना चाहूँगा हमारी साथी डॉक्टर समीना बसु मैम को कि वो आए और शुक्रिया की रस्म अदा करें. प्लीज़. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. Honorable Director DDE Professor Razaullah Khan sir, esteemed senior colleagues from MANUU, respected faculty members, RDs and ARDs from regional centers across the country,
It's a matter of honor for me to offer vote of thanks in the post-lunch session of this orientation workshop. In this post-lunch session, we had with us distinguished resource person Professor S. Jilani, former UGC Regional Head and Director, Center for Distance and Virtual Learning, SCU. Professor Jilani deliberated upon one of the important components of distance education, that's student expectations and support services from higher education institutions. Professor Jilani highlighted the need of distance education, higher education in developed countries, present challenges in distance education, how to improve the student support services, what should be the functions of regular study centers, significance of academic bank of credits, mobility across various disciplines and higher education institutions, what steps must be taken for introducing new courses, e-content, metaverse, augmented reality, evolution of technology, e-learning components, and many other things. Professor Jilani, I, on behalf of MANUU in general and DDE in particular, extend my sincere thanks to you for sparing your valuable time and for enlightening all of us with your knowledge on this important component of distance education. I thank all the RDs and ARDs for their active participation in this session. I thank Dr. Muhammad Jafar for making a note on the proceedings of the session. And lastly, I thank Dr. Sheikh Wasim, Associate Professor, DDE, for organizing this session. Thank you so much. आगे की कार्रवाई के लिए मैं प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पटेल साहब को दावत देता हूं कि वो आगे के सेशन की कार्रवाई को. Sir, may I request Professor V. Venkaya sir to come on the dais? I'll give a brief introduction of Professor V. Venkaya sir, then I request Ahsan Saab to welcome him after that by giving a bouquet. Ladies and gentlemen, good afternoon, rather good evening. It is with great pleasure and honor that I introduce to you a distinguished academic leader who has played an instrumental role in the advancement of open and distance learning throughout his illustrious career. Today we have the privilege of listening to a renowned figure in the field of distance education, Professor V. Venkaya. With over 45 years of experience in teaching, research and administration in ODL, Professor Venkaya has emerged as a guiding force and a respected voice in the transformative field. He has held several senior positions at esteemed universities in India, including the notable position of Vice Chancellor of Krishna University, Machilipatnam, and Rector of Dr. B.R. Ambedkar Open University, the first Open University of India. In addition to his accomplishments on the national stage, Professor Venkaya has also been involved with esteemed international organizations such as Commonwealth of Learning, UNESCO, and the National Assessment and Accreditation Council. Professor Venkaya's profound dedication to ODL is palpable in his unwavering advocacy for its potential and revolutionize education and create lifelong learning opportunities for all. As a prolific author and researcher, he has contributed significantly to the field, publishing over 16 books and 43 researches, just 2 minutes, papers on various aspects of ODL. His expertise extends beyond the realm of academia, as he frequently shares insights and knowledge as a speaker at conferences and workshops on ODL. His presentations are known for being both engaging and informative, captivating audience with his depth of understanding. His CV is very huge, but always whenever I introduce him in any platform, he asks me to stop because the discussion goes on long.
Ladies and gentlemen, Professor Venkaiah is a very well-known figure in MANUU. Please join me in extending a warm welcome to Professor V. Venkaiah as we eagerly anticipate his enlightening and thought-provoking address on the changing landscape of open and distance learning. May I request Professor Ahsan Saab to come forward and hand over bouquet and shawl to Professor V. Venkaiah. Sir, you can come this way only, from backside. Sir, now the dais is open for you, for your intervention. Thank you, sir. Respected Professor Rajaullah Khan ji, Director of DDE MANUU, Professor Ganta Ramesh ji, Professor Jilani ji, Professor Mustaq Patel Saab, distinguished staff at the headquarters DDE, and very distinguished RDs and ARDs of different regional centers across India. मेरे भाइयों और बहनों, I extend very hearty greetings. It is not anyway warm. Very hearty greetings and good evening. Let me at the outset confess that I am not going to inform anything new which you do not know. Then what is the purpose? The purpose is to refresh and to reinforce. To refresh ourselves and to reinforce. Because in the same hall and in several other halls, seminar halls in this campus, there were several programs held, by and large on the same theme, and also National Policy of Education, National Policy on Education 2020. And hence, whatever I am going to talk will be what we have already discussed several times. But some focus will be there about the responsibility of all of us in creating a paradigm shift, transcending and transiting from the current state of affairs of ODL system to the future kind of ODL system. In that, what kind of role we have to play as functionaries at different levels, I am going to emphasize. Obviously, to say about NPE 2020 and the impact on ODL and online education and technology integration, I must draw attention about the evolution of the national policies and also the kind of changes that have come about in the ODL front. Well, my presentation is on national education policies and ODL thrust. It is not 2020 policy alone. And NEP 2020, a special focus on ODL, technology integration, and also the goal of achieving 50% GER by 2035. Over so many years, in the past 5 years, if we see, every year it was not more than, not even 2% on an average, the compound growth was. But now, in a matter of 13 years from now, or 12 years, we have to achieve almost double the GER, which is a Herculean task. That is set forth as a goal by NPE 2020. Right? Online learning, blended learning, and e-learning modalities. I am going to emphasize this. Today, MANUU, DDE MANUU is offering essentially print-based courses
supported and supplemented by audio video materials. That is not going to be enough. In another 5 years, there must be a total transformation in the methodology of DDE in terms of the number of courses, type of courses, and methodology of offering courses. This we have to remember. There will be a total transformation. For that, what is required is, I emphasize capacity building. To meet the requirements of future ODL and online, capacity building of DDE as an institution in MANUU, the faculty and the staff in DDE at headquarters, the RDs and ARDs at regional centers, the academic counselors at learner centers, and the learners. The capacity building is a broad spectrum. If we are equipped with the technology use and our students, our learners are not able to access and make use of, it is no use. So we have to match to the requirements of the profiles of the students and modify our technology. That is what Tony Bates said, actions model. Actions model of appropriate technologies. What DDE should use must be appropriate to the context. They must be accessible, technology must be accessible, affordable, cost, interactive, teaching effectiveness, interactivity, organization, novelty, speed. The actions model is A for access, C for cost, T for teaching effectiveness, I for interaction, O for organization, N for novelty, S for speed. So, there is a responsibility of evolving appropriate technologies considering the student profile and see that we reach out with such technologies. It is not only well endowed at the headquarters here or at the regional centers. We have to prepare learner centers also for that progressively. Then e-learning platforms, OER and MOOCs. How we must make use of MOOCs, which is also emphasized in NEP 2020 in a big way, and already AICT sent a circular. 25% of the credits of the entire engineering programs can be acquired from the SWAYAM portal, and acquiring the credits up to that, they can be transferred, that kind of change. So MOOCs and also the OER-based e-course, OER-based e-learning, OER-based e-learning programs. We are not going to develop any material. Even first it was tested by, it was launched by Athabasca Open University, OER-based e-learning, where they say that scout for the OER available in the public domain, which are freely available, bring such material to your curriculum, and if there are some gaps in the curriculum you defined, develop materials online only for such segments. All other materials can be borrowed from the public domain, which are called open education resources. They are copy left and there is no copyright issue. We can borrow. They can be edited, re-edited, mixed, remixed, tweaked, translated, localized, customized. That is the freedom we have. If they are under share alike by Creative Commons. So this has to be kept in mind. Norms for ODL quality and preparedness of stakeholders, that's what I said. All teachers, students, and functionaries, including learner centers, etc. Learners, including learners. That is what is called stakeholders. And now, lastly, I am giving ODL scenario. Remember, earlier, when the Ambedkar Open University was set up, when DDE started in courses in 1999, and even when IGNA was set up, there was a problem of single mode university being not recognized. Our graduates were not admitted in PG. Now that problem was overcome to a great extent. At that time, single mode was called in question.
Now British Open University is going to make it online programs. It's already decided. Recently I received through Facebook column from Commonwealth of Learning officer, British Open University is going to start online programs, on-campus programs along with online and also the distance mode programs. And when Rajsekharan Pillai was Vice Chancellor of IGNOU, he already started on-campus programs simultaneously. But after that it was suspended. It was a different story. What is important is the convergence is almost completed. The division of single mode and conventional is coming together, and it is convergence already that has taken place. And a flagship university which is 10th in teaching and 8th in research out of 125 universities in UK has adopted on-campus programs. They may be started next year. Take it, that is the kind of. And hence, we have to be offline, that is ODL, blended mode, and online. Slowly, the present print mode will disappear, will become blended mode more and more. That's going to. And hence, it is the responsibility of every one of us present here to prepare ourselves and to well arm to meet the challenges of the future ODL and online programs. So now I think this is Kasturi Rangan in one of his television interviews said, it was because of only 25% of engineering graduates being, I am referring to NASSCOM, McKinsey, and employability report of the nation in India. See, 25% of the engineering graduates are appropriately employed. Only 15 to 18% of the management graduates are MBAs are appropriately employed. And general courses like social sciences, humanities, it is only 10 to 12%. It depends. Because of the report variation, the change has come. Otherwise, it is not more than 15 in the general, not more than 25 in the case of engineering and technology. Appropriately employed means a BTech graduate or MTech graduate, compensation and suitability of the job. Otherwise, they eke out their livelihood somehow. Because they receive some education, they know how to manage their life and then adjust and compromise. When UP government has advertised for office subordinates, BTech graduates, MTech graduates, MBAs, PhDs also applied because it's a government job. That's the kind of situation. So what is required is a total change. It is not fine-tuning. It's change required, Kasturi Rangan said. Now, the education needs a total transformation. Okay, next. First important policy, in fact, the first education policy in India was in 1882 by William Hunter. Then the next important policy was by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan in 1948 to review the education system soon after independence. Then it was 62-64 Kothari Commission. And 68 Commission, first distance education was thought of. This is the quotation. Part-time education and correspondence course should be developed on a large scale at the university stage. Education through part-time and correspondence courses should be given the same status as full-time education. By then already in 1962, Delhi University started correspondence education. And several other universities started, but emphasis was given recognizing distance education in 1968. Next. It was in a great fillip and a great movement took place in the NEP 1986 and Program of Action 1992. By 1985, IGNOU was established, and taking that as model, this was the comment made by the Commission. The open learning system has been initiated in order to augment opportunities for higher education as an instrument of democratizing education
and de-elitizing, democratization and de-elitization. It means education was available to those who can afford, who are rich, but it is available to everybody. That is the concept here. Democratizing education and to make it a lifelong process, lifelong learning. The flexibility and innovativeness of the OLS, Open Learning System, are particularly suited to the diverse requirements of the citizens of our country. Remote rural areas, socially disadvantaged, those who could not afford, socially disadvantaged and economically backward, all segments, including those who had joined the vocational stream. Even then, emphasis was given to vocational stream and also ODL. After IGNOU became, and several state open universities became prominent, and concurrently, several universities, by then, you know, Bharatidasan, Annamalai, Madurai Kamaraj, Madras University were known for generating huge surpluses where the government has reduced the budgetary provision by the extent of surplus every year. That was the kind of situation. Next. Then achievements of ODL system. What? ODL established credibility as a legitimate method of education. Number one. Number two, democratized higher education by reaching the unreached. Reaching the unreached. Education at your doorstep. Remote, rural. Abundant educational resources are made available. In post-90, audio materials, video materials, print materials, diverse kind of learning materials were made available for the cause of education, higher education. Education is made more cost-effective. To produce a graduate through ODL, it is one-third the cost. One-third the cost. Research studies revealed, not my comment. Lifelong learning, continuous learning opportunities are made available. Those who are in service, they got upgraded in terms of their upskilled and upgraded in terms of their qualifications and skills. Introduced innovative and job-oriented vocational educational programs. These were the achievements that we have seen over the period. Next. Major features of NEP 2020. I think these are all, I skipped this, all of us are quite familiar. I only brought to see that equity and inclusiveness is one, life skills and for logical decision making and innovation, and the flexibility in terms of open distance learning, etc. were the things. Teachers and faculty as the heart of the learning process. It was recognized. All of us know it was only from 1996 that teachers were recognized even in the universities in terms of the proper compensation. 1996 scales and afterwards. Okay, next. 2020 and ODL. These are the provisions. All institutions who have option to run ODL and online programs if they are accredited to do so. Believe the competitors for us, for public funded central and state universities, or the deemed to be universities and private universities in a big way. Most of them are getting A++ grade with CGPA required. They are declaring, UGC is declaring them as category 1 universities. They can start online programs straight away. Not only that, 50 autonomous colleges were also recognized to offer online programs by UGC. What it means, and as Professor Jilani sir mentioned, already foreign universities are going to be invited into the homeland. All this is going to create a severe competition, and survival of the fittest is going to be the norm and law of nature in education front. Not only in ODL and online, but even on-campus programs that's going to happen. Okay, then ODL to aim to be equivalent to the highest quality of on-campus programs, ODL to aim to achieve global standards, ODL to play its role to achieve 50% GER, ODL, and under section 23 of the NEP 2020, ODL and
That was emphasized, technology integration and online education is the caption. So there they said ODL to play its role to achieve 50% of GER. That is promoting ODL and online courses to see that the GER of 50% is achieved. That is emphasized in that section. And ODL to introduce innovations in teaching learning process. Innovations in teaching learning process. Next, please. Next. And also norms for ODL quality. Norms for ODL quality, competent faculty and highly rated programs. Competent faculty and highly rated programs. That is one important aspect. Adequate facilities and support staff. Learning outcomes equal to in-class programs. Now we may say the curriculum is same, examination is same, but are learning outcomes same? It's a question mark. It's a question mark. Can we make a parity? That is a challenge. All of us have to underline. Learning outcomes equal to in-class programs, adhering to standards of quality and regulation accreditation norms. Accredited HEIs are only permitted to offer ODL. And lastly, that is to maintain quality, only accredited HEIs are permitted to offer ODL and online. And also, I tell you frankly, some of the universities are not permitted to make admissions by the UGC this year. Already 4 universities were stopped. Unless they get NAC accreditation before June 30th, they are not permitted. And now they are representing to the UGC, but UGC is not hearing anything. And unless one gets by the end of this month, it is difficult to make admissions in July batch. That is the norm. So funding system-based research to improve ODL quality. System-based research. Research on ODL system to embed the findings of research in ODL teaching learning. That is the emphasis. Okay, next. ODL and technology use, please. Online digital repository resources. For every course, we must develop a digital repository. It is the responsibility of the course coordinator. It is not only sending the course material in print form. It must be with audio, video, PPTs, notes, everything. It must be there, digital repository. And also OER, borrowed from the OER sources. Capacity development of teachers to use technology. Teachers here are our academic counselors also must be enabled to develop their skills, even in the rural most important places. OER and MOOCs must be used in a big way. Not only OER, MOOCs, teachers must be able to prepare MOOCs, offer MOOC courses as a part of ODL and online programs. Recognition and credits to MOOCs, which is already there as a policy in the government. Use of technology-enabled learning to increase access, improve quality, and to reduce cost. Technology use is for improving quality, enhancing the access, and also to make it cost-effective, reduce the cost of education. And blended learning and online learning. Blended learning, online learning. There will be coexistence of different systems. Now, what is required? I gave some later 2 slides which are very important, which focus on the ODL, the changing scenario. The theme of this session is ODL, the changing scenario. I developed 2 slides for it. I will tell you. So blended and online learning, and e-learning modalities are going to be individualized self-paced e-learning online, individualized self-paced e-learning offline, and then it means making use of the resources, online materials, and offline. Self-paced or paced? Pardon? Self-paced. Individualized. P, sorry. Yeah, not self. It's a spelling mistake.
Okay, and then group-based e-learning synchronously and group-based e-learning asynchronously. These are the 4 forms of e-learning modalities. Okay, next. E-learning resources. Next. Yeah, same. Offline or online, non-interactive or interactive, and copyrighted or open licensed. These are the different types of materials that we are going to make use of. Okay? And next. And yeah, this is the kind of model we are going to have. I said coexistence of diverse systems. Completely online, completely offline, and blended mode, including hybrid, flipped classroom, whatever you call it, okay? This is the kind of, I think you know, this is by Tony Bates. I have to acknowledge that. It's borrowed from Tony Bates. Teaching in a Digital Age is the name of the book authored by him. Next. And this is about blended learning. You can go through that, what it is. I described it. Next, online learning pattern, a form of distance education in which a course or program is intentionally designed in advance to be delivered fully online. Online program is fully online, I'm sorry. Yeah, it is fully online. Okay. And faculty use pedagogical strategies for instruction, student engagement and assessment that are specific to learning in a virtual environment. It is not only that, every element of teaching learning process. How do you make your online program interactive? The first part of the online program is to introduce the course and to introduce the facilitator. Online facilitation is very important. Then online learning is any form of learning conducted partly or wholly over the internet. And online learning is largely asynchronous. It's not synchronous. Okay? Asynchronous. Next. Online learning environment, I think you can go through that later. Next. Yeah. Prerequisites for online learning are, all of us are aware, bandwidth, connectivity, devices, safety, security, skills development, and learner support. These are essentials, prerequisites for successful offer of online program. Of all, the more important is bandwidth, technology, and uninterrupted power. These are essential for, when we were conducting during COVID classes, we know what kind of problems we faced. Okay. And now the words are digital well-being, digital mindfulness, digital etiquette. Digital etiquette, digital mindfulness, digital well-being. These are the buzzwords today because of long hours of working and using the online platforms. Next. Yeah, this is what the theme of the session is. Shift from single mode to multiple modes. I said, British Open University example. Go for print mode, online mode, and blended mode. It's not only single mode, multiple modes. Right? Move from single medium to multiple media. Most of the dual mode universities, not MANUU, are still depending largely on print material. They don't know what video content is. That's the kind of situation. Dependency model to self-reliant model. Now what happens? For development of materials, we depend on outsiders. They don't cooperate. And sometimes after 6 months, we change the coordinator, we change the course writer, another 6 months, delay in materials development and all that. So, it must be adequately staffed to see that delays do not occur. Then only learners will have been served better and learning can take place effectively.
rigid to flexible professional management model. Now, I may say the kind of regulations enforced by the regulatory bodies are prohibitive and discouraging ODL in a big way. I think all of you would agree. Okay? That's why the rigid model, only if a university is doing well, there must be some flexibility. And hence, what I said is, rigid to flexible professional management. Management must be professional, but it must be flexible, right? And give time, honor their commitment, and then if they fail, then you can take regulatory measures like that. Innovations and adoption of technologies in teaching learning strategies. If see, innovations in teaching learning, there is no boundary. You are the creator. Did we know about Google Classroom earlier? Meet Google earlier? All these platforms can be used to see that our students are served better. Remedial counseling is taken up by DDE under the leadership of the director. For online remedial counseling is provided. So it's an innovation to extend the support, right? Learner-centric support to home-based support services. From learner center, shift must be to the home-based. This is the kind of scenario that I envisage, and it is going to be a reality. It is not only providing services at learner, but we must provide. If he wants a certificate to be downloaded, keep his certificate in cloud, let him download at his home. TCS is giving service to several engineering colleges. And the engineering colleges don't need to, and the students don't need to, for every semester he doesn't need. He will take a printout, and consolidated marks memo and degree certificate will be given after 4 years by the university. In the meantime, all the certificates are there. 7 semesters certificates are enclosed, and US admission is sought already, subject to the condition that he gets the same grade in the last semester. So this is from learner center to home-based service. That's what I said. Learner-centric support to home-based support services. Procedure-oriented system to results-based approach. We should not be bureaucratic. Flexibility, liberal approach for results, professionalism in management, rigidity to be replaced. I think these are the kind of shifts that are going to take place, and already they have taken place to a great extent. It will be much more intense in the years to come. This I would like to emphasize. Next. This is ODL scenario I thought of. Next, please. Way forward, redesigning the curriculum and courses. No, I noted last only, don't worry. Director said 40 minutes. That is why I ran through 4 slides in between. Okay, I respect the calendar integrity. Okay, now redesigning the curriculum and courses, sound instructional design for ODL and online system, technology infrastructure, access and affordability, institutional and leadership faith and commitment, preparedness and competence of faculty, that is what I said, capacity building, right and optimal use of technology by students, focus on OER, MOOCs and blended learning, emphasis on synchronous as well as asynchronous learning. Next. I think these are the references I made use of for this presentation. So thank you very much. Thank you, sir. One of my colleagues once said, Dr. Imam Azam, if Gopichand Narang is speaking anywhere, he would love to go and listen to him, leaving all his works. And similar is the position of Professor V. Venkaya in distance education. Wherever you speak, we love to leave our work and go and listen to you. It's a good occasion to listen to you, sir, today. You spoke about NEP 2020
Then action model, which you always advocate. MOOCs, you said that 40% MOOCs have to be adopted on in engineering programs. I have witnessed that as a registrar of the university, where we had less number of teachers and 40% courses were offered through OER MOOCs. You spoke about the importance of OER, and Kasturi Rangan, you said the education needs change, not fine-tuning. So overall change is required in education. Sir, my thinking is, for a teacher education program, there has to be a school. That is, when I apply that concept for distance education for dual mode universities, for a dual mode universities, what I think department should act as a demonstration department, which and blended mode of learning can be adopted there, that can be extended to distance education departments of the university. Thank you, sir, for giving insights in the area of ODL scenario, which is continuously changing. With these few observations, I request my colleague Dr. Syed Aman Ubaid to come forward and propose vote of thanks for today's this theme. Thank you, sir. On behalf of Directorate of Distance Education, I am very grateful to Professor Venkaiah sir for his informative and thoughtful lecture on ODL, the changing scenario. Here I want to quote Alan Watts' quotation, who said that the only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance. So, sir, I am hopeful that DDE will proactively adopt all the changes going on in ODL field, and definitely will become an institute of eminence in distance education. So, thank you one and all.